Confirm if we are live now. Just tell me when we are live. Friends, are we live now? I think we are live now. Yes, we are live now. So, friends, indeed, a warm welcome to one and all. मैं सीए प्रतीक ने मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं MEPL क्लासेस में फॉर दिस मैराथन. यस, ये मैराथन है CMA फाइनल डायरेक्ट टैक्सेस का. यस, टुडे till about 5 o'clock, we are going to go ahead and strongly do 80 plus marks of your direct taxes. So आप please मेरे साथ बने रहिए end तक. If you have not yet subscribed to the channel, do subscribe to the channel. Do hit the bell icon because MEPL means quality education at affordable prices. So दोस्तों, कोई भी आपका नोटिफिकेशन या कोई भी आपका you know important वीडियो मिस ना हो ऐसे लगता है तो प्लीज डू subscribe to the channel and hit the bell icon. And thank you so much guys for liking the video. Okay, I am 110% sure that you have liked the video. So I can see Harsh, Sayang, Mosami, Yakshapriya, all online, all here, they have joined. So friends, let's start. Let me tell you what is the concept of today's marathon. Okay, let me take you to my tab. So I hope my tab is now visible. I hope मेरा tab अभी visible है आपके लिए. Yes. So friends, understand, we are going to cover 85 plus marks till 5 o'clock today. And ये सिर्फ बोलने की चीज नहीं है. We are going to solve many questions. You will see the demo now. अब हम बहुत सारे questions solve करने वाले हैं. Exactly आज का schedule कैसे होने वाला है? Let me tell you. 11 to 1 will be the first slot. Then उसके बाद 1:30 to 3:30 will be next slot. Then 4 to about 5 or 6, whatever time it takes. So basically 2 plus 2 plus 2, effectively minimum 6 hours marathon it is going to be. So are you ready for today's marathon? मैं आगे जाने से पहले आपको एबीसी एनालिसिस बताना चाहता हूं कि इनपुट आउटपुट रेशियो क्या है, क्या आपको करना चाहिए इस सीएमए फाइनल डीटी में, व्हाट ऑल यू शुड डू इन डीटी which will fetch you good marks. So friends, if I talk about A category questions, they are taxation of companies, different aspects of tax planning, business restructuring, double taxation avoidance agreements एंड ट्रांसफर प्राइसिंग. अगर हम इतना करते हैं ना डीटी में तो हमारे स्ट्रॉन्ग 81 मार्क्स कवर हो जाते हैं. Our strong 81 marks get covered if we do taxation of companies. Okay, इसमें especially MAT, then 115 BAA, 115 BAB. Okay, then business restructuring में slump sale, amalgamation, demerger, इसमें से एक सवाल पूछने वाले हैं. So business restructuring. Then different aspects of tax planning में whether you should buy the asset or whether you should take the asset on lease. Okay, then financing options में से कौन सा financing option select करना चाहिए. Then particular case whether it is of tax planning, management, avoidance, evasion. Okay, इसमें कुछ ना कुछ पूछने वाले हैं. Then my dear friends, double taxation avoidance agreement section 90, section 91 मतलब bilateral relief and then unilateral relief. Clear that we are going to do. And transfer pricing में बहुत सारी चीजें, the meaning of associated entities, meaning of international transaction, methods of calculating arm's length price, effect of adopting the transfer price on the total income of Indian company, then advance pricing agreement, secondary adjustment. Okay, all these things. And literally
हम उसके सम्स आज इस बैच में सॉल्व करने वाले हैं. Okay, then friends comes taxation of individual including NR, then interest and fees जिसमें मेनली एडवांस टैक्स. तो ये एडवांस टैक्स वाला पार्ट भी आज मैं आपसे कवर करवाने वाला हूँ. मतलब आज मैं आपसे ये 81 मार्क्स के क्वेश्चंस एंड ये 4 मार्क्स ऐसे करके टोटल 85 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे सॉल्व करवाने वाला हूँ. सो आर यू रेडी गाइस? हाउ इज द जोश? Let me know, are you ready for today's session? Okay, then C category questions will be taxation of trust, mutual association, tax management जिसमें कि ITR वगैरह आता है, then assessment procedure, search seizure, collection, recovery and refund of taxes, grievance redressal, then revision, settlement commission, advance ruling, penalty prosecution, CBDT and authorities, ICDS, Black Money Act, case study and GAAR. एक याद रखना है सबको कि इक्वलाइजेशन लेवी ये टॉपिक था ना, इक्वलाइजेशन लेवाई ये जो टॉपिक था ना, मतलब ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन, ये अभी नॉट एप्लीकेबल है. ओके, तो प्लीज इतना याद रखना कि ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन का टैक्सेशन ये अभी नॉट एप्लीकेबल है, इसलिए उसको कहीं पे भी इंक्लूड नहीं किया है. यस विनायक जी, फंटास्टिक. यक्षप्रिया जी, let's go ahead. So shall we start with taxation of companies, जिसमें तो मैं आपको दिखा देता हूं एक बार कि हमने क्या किया है. हमने 21 टॉप क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं. कितने? 21. ये देखो, पहला जो क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया है दैट इज ऑफ टैक्सेशन ऑफ कंपनीज विच इज ऑफ टोटल टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेशन विच इंक्लूड्स मैट लायबिलिटी as well as tax liability as per normal provisions of the act. मतलब सब कुछ कवर हो जाएगा इस क्वेश्चन में. क्लियर? मतलब आपको एग्जाम में सिर्फ मैट पूछते हैं तो आप वो भी कर पाओगे. इफ दे आस्क यू टोटल इनकम एज पर नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, then you can calculate total income also. You can calculate tax on total income also. Okay, you can calculate total income as per normal provisions. On that you can calculate tax, then you can calculate book profits, you can calculate MAT on that book profits, and then you will pay normal tax or MAT whichever is higher. So that will be your final tax payable. Getting it friends? So ये एक ओवरऑल क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं. Let me first give you idea of what we are going to do in today's batch. Clear? Then we will go ahead with each and everything. Yes, मौसमी जी का एक सवाल है, सर आज का मैराथन सिर्फ करने से हो जाएगा क्या, क्योंकि मेरा डीटी पढ़ा हुआ ही नहीं है अच्छे से. अच्छा, मैं बोलूंगा आपको कि आज का आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है मौसमी जी, तो आपको समझ में आएगा कौन से चीजों के डीप में जाना है, and accordingly you can go ahead and from this start studying. बट देखो एंड तक सेशन को देखो. ओके, तो ये देखो, ये पहला क्वेश्चन है जो हम डिटेल में सॉल्व करेंगे. सेकंड क्वेश्चन इज ऑन 115 BAB एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन 115 BAA, जो लिटरली हम बैठ के सॉल्व करने वाले हैं. क्लियर? देन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टैक्स प्लानिंग. तो मुझे ऐसे लगता है कि टैक्सेशन ऑफ कंपनीज का इतना करने से आपके अबाउट 20 मार्क्स सिक्योर्ड हो जाएंगे. देन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टैक्स प्लानिंग में वी आर गोइंग टू डू अ क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिफाइंग वेदर ट्रांजैक्शन इज टैक्स प्लानिंग, मैनेजमेंट, अवॉइडेंस और इवेजन. देन 115 BSc में जाना चाहिए कि 115 BSc के बाहर जाना चाहिए, इंडिविजुअल एसएससी को. उसके हम दो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चन नंबर. देन टैक्स प्लानिंग विथ रिस्पेक्ट टू फाइनेंसिंग ऑप्शंस, वी आर गोइंग टू सॉल्व वन क्वेश्चन ऑन दैट. देन इन बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन ऑन slump sale, then amalgamation,
then conversion of firm into company, then demerger, ये सब सम किसके सॉल्व करने वाले हैं? बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग के. Then unilateral relief, we are going to solve two questions. Clear? Of unilateral relief. Then in transfer pricing, whether two entities are associated entities, ये डिटरमाइन करने के लिए हम एक सम सॉल्व करने वाले हैं, तो उससे वो कॉन्सेप्ट रिकलेक्ट हो जाएगा. देन कंप्यूटेशन ऑफ एएलपी एंड इट्स इफेक्ट ऑन टोटल इनकम ऑफ इंडियन एंटिटी. ओके, ये हम सॉल्व करने वाले उसका एक क्वेश्चन. देन कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम व्हेन ट्रांजैक्शन इज विद नोटिफाइड जुरिसडिक्शनल एरिया, इसका सॉल्व होने वाला है एक क्वेश्चन. थिन कैपिटलाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. थिन कैपिटलाइजेशन मतलब जब इंडियन एंटिटी उसके एसोसिएटेड एंटिटी को कुछ लोन का इंटरेस्ट पे करती है, तो उसके लिए कुछ लिमिट होता है. ओके, दैट इज 30% ऑफ एबिटडा. इसके आगे वो इंटरेस्ट नहीं जाना चाहिए, ओवरऑल इंटरेस्ट. सो वी आर गोइंग टू डू वन क्वेश्चन ऑन दैट एज वेल. देन सेकेंडरी एडजस्टमेंट पे हम सॉल्व करने वाले हैं एक क्वेश्चन, रादर दो क्वेश्चंस. देन एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट पे हम सॉल्व करने वाले हैं दो क्वेश्चंस. क्लियर? So this way strong 21 questions are designed, and then we will afterwards solve one question on advanced tax also. Okay, so ऐसे 21 22 strong questions आप expect कर सकते हो आज के बैच में till 5 or 6 o'clock. So are you ready for today's session? Yes. Where to get this PDF? So we will be uploading this PDF on the Telegram channels, as well as we will be putting it in the, yes, kahan pe? We will be putting it in the description to this video. So are you ready friends? Taxation of companies के साथ शुरुआत करते हैं. Okay, this was a question. तो ऐसे frequently asked questions से select किए. दिसंबर 15 में 15 मार्क्स के लिए, दिसंबर 19 में 16 मार्क्स के लिए, दिसंबर 24 में 14 मार्क्स के लिए. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. संविता का क्वेश्चन है. संविता, आर यू देयर विद संविता? यस. सो सी, लेट्स स्टार्ट. टैक्सेशन ऑफ कंपनीज में मैंने आपको बोला व्हाट वी हैव टू डू. वी हैव टू कैलकुलेट नॉर्मल टैक्स एंड कंपेयर इट विथ मैट and pay normal tax or MAT, whichever is higher. Okay, now total tax. See, Samvita Manufacturing Industries Limited reports NP of 15 lakhs. So NP is 15 lakhs for the year ended 31st March 26 after debit or credit of following items. ओके, अब क्या दिया है? आइटम्स डेबिटेड आर गिवन, आइटम्स क्रेडिटेड आर गिवन, एंड देन यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट फॉर द AY 26-27. क्या कैलकुलेट करना है? इनकम लायबल टू टैक्स अंडर 115 JB, मतलब कैलकुलेट करना है बुक प्रॉफिट्स, okay, of Income Tax Act and total income chargeable to income tax as per normal provisions. Clear? So both you have to calculate. Is it clear? And हमें बिल्कुल actually tax liability पूछी नहीं है, but I will modify the question and ask you to calculate final tax liability also. Okay, I will ask you final tax liability also. So on the book profit, we will calculate MAT, and on the normal total income, we will calculate normal tax and pay whichever is higher. Clear? So let's start. पहले किसके एंगल से सोचते हैं? First, we will think from the angle of normal total income.
टोटल इनकम के एंगल से ही सोचते हैं पहले. So start with 15 lakhs, do adjustments of PGBP. Provision for income tax. While calculating total income, we will add it. Expenditure towards amalgamation of Cochin Industries, 8 lakh रुपए expense है. So allowed is only 1/5, because allowed is 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 in 5 equal annual installments. Amalgamation expense. So what you will do, you will add back entire 8 lakhs and you will subtract 1.6 lakhs. That is 1/5. Then fees for technical services paid to foreign company without deduction of tax at source. अपने फॉरेन कंपनी को फी पे की है विदाउट डूइंग टीडीएस. तो क्या होता है, फुल अमाउंट डिसअलाउ होती है as per 40AI. Okay, if this was paid to resident entity, then 30% would have been disallowed. Provision for bad and doubtful debts ऐड होगा क्योंकि प्रोविजन है. डेप्रिसिएशन ऐड होगा एज पर आईटी एक्ट, माइनस होगा. कैश पेमेंट फॉर परचेस ऑफ रॉ मटेरियल इन एक्सेस ऑफ 10,000. Okay, so please add back this 7 lakhs as per 48(3). याद आ रहा है? Any amount which you are paying in excess of 10,000 on a single day to a single person, disallow होती है. Okay, next, बैंक टर्म लोन इंटरेस्ट 8 लाख रुपए टोटल पे किया है, बट 8 लाख का प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम इज विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट इज पेड आफ्टर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर. 43B के अनुसार वो ऐड हो जाएगा. तो एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द ईयर अप टू ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर इज 3 lakhs. सो 8 लाख में से 3 लाख पे हुआ है, तो कितना पे नहीं हुआ है? 5 लाख पे नहीं हुआ है, तो 5 लाख हो जाएगा एड बैक. देन रेंट पेड फॉर ब्रांच प्रीमाइसेस owned by one of the directors who has 22% stake in the company. 12 लाख रुपए पे किए हैं, बट 25% ऑफ द एक्सपेंडिचर इज एक्सेसिव. तो जितना एक्सेसिव है वो हो जाएगा एड बैक. तो 12 लाख का 25%, that is 3 lakhs, will be added back. Clear? Then friends, go ahead, check what is there in the additional information. Depreciation debited to the P&L account given above includes 10 lakh in respect of assets revalued. Okay, so अभी depreciation as per IT Act minus करते वक्त you will have to minus as per IT Act. So of course IT Act में depreciation on revalued assets कभी नहीं आता. IT Act में सिर्फ WDV के ऊपर जो depreciation है वही आता है. तो माइनस करते वक्त आप 30 लाख से माइनस करने वाले हो. देन देयर इज ब्रॉट फॉरवर्ड अमाउंट्स. बिजनेस लॉस एज पर आईटी इज नील एंड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एज पर आईटी इज 35 lakhs. सो 35 lakhs हो जाएगा माइनस while computing total income. Clear all of you? Then go ahead and check what are the items credited. Revaluation reserve in respect of fixed assets ये होगा माइनस. एग्री इनकम भी होगा माइनस. एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी विल ऑल्सो बी सबट्रैक्टेड. तो क्या आप सब लोग तैयार हो? आर यू ऑल रेडी टू सॉल्व दिस स्टेप बाय स्टेप? तो देखो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स रिवाइज हुए. आर यू ऑल रेडी टू सॉल्व दिस? तो मैं क्या करता हूं, हमारे लिए एक नोटबुक ही बना लेता हूं. एक ही मिनट देना मुझे. पेज सेटिंग, ठीक है ना?
ये कलर ठीक है, सपोज यही कलर लेते, पेज सेटिंग किया, क्या चाहिए मुझे, लाइंस चाहिए एक्चुअली। मुझे एक्चुअली लाइन चाहिए। या सो आई एम रेडी नाउ। So give the heading computation of total income of, नाम क्या है कंपनी का, संविता, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ संविता मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड, संविता मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड for AY 26-27 in bracket PY 25-26। तो ये क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ओके एंड ये ए स्टेप है, particulars and make two amount columns, make two amount columns, amount in terms of rupees। okay let's start। A point PGBP, हम कैलकुलेट करने वाले हैं पीजीबीपी। पीजीबीपी स्टार्ट होगा कहां से, पीजीबीपी स्टार्ट होगा फ्रॉम एनपी एज पर पी एंड एल अकाउंट। सो व्हाट इज एनपी, एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, so it is rupees 15 lakhs। now friends add क्या होता है, items debited but not allowed as deductions, items debited but not allowed as deductions, but not allowed as deductions slash specific disallowances, slash specific disallowances। so let's start। it will have provision for income tax, so provision for income tax is friends 5 lakh rupees, please take 5 lakh। then expenditure towards amalgamation, तो इसमें क्या होता है, you will have to add back entire amount debited, that is of rupees 8 lakh, and you will subtract rupees 1.6 lakh, that is 8 lakh into 1 by 5। so you have added back what is disallowed, you have subtracted what is allowed, so net what you have to add back is 6 lakh 40,000। technical services paid to non-resident, fees for technical services paid to non-resident, main is without TDS, without TDS, okay, therefore disallowed 100%, therefore disallowed 100% as per section 40AI। ओके तो अमाउंट 1 लाख रुपए है, सो प्लीज टेक दैट 1 लाख। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन, you know provision for any losses, provision for any unascertain liabilities, ये सब कुछ ऐड हो जाएगा। सो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, so isn't it how much,
इट इज 6 lakhs. उसके बाद depreciation debited. Why are we adding back depreciation debited? We are adding back depreciation debited because it is allowed separately, as it will be allowed separately. मुझे पता है दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि क्यों सर इतना सॉल्व करने की सब कुछ क्यों जरूरत है, बट फ्रेंड्स, इफ यू गिव मी टाइम टिल 6 o'clock today, your 85 marks questions will be done very nicely. Okay, so please stay tuned till the end. So depreciation disallowed is 40 lakhs. Then cash payment for expenses in excess of rupees 10,000 on a single day to a single person. On a single day to a single person. Okay, disallowed under section 48(3), क्योंकि टिपिकली इसी में से कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स एग्जाम में आने वाले हैं. So that is 7 lakh rupees. Entire such payment is disallowed. So it is 7 lakh. Next, bank term loan interest actually paid. Bank term loan interest. Bank term loan interest actually paid up to due date of filing ITR is only allowed. Balance is added back. So what is the balance? Balance is, so basically total was 8 lakh, out of which you have paid 3 lakh. So not paid is 5 lakh. So 5 lakhs we are adding back. And then what you get? Rent paid to branch assets. Rent paid, okay, to a person having substantial interest. To a person having substantial interest. ये कितना डिसअला होता है? एक्सेसिव जितना है वो डिसअला होता है. तो इन ब्रैकेट excessive amount shall be disallowed. Excessive amount shall be disallowed. तो कितनी है excessive amount? Friends, excessive amount is 25% of rupees 12 lakhs is given, which is 3 lakhs. तो ये जो एड बैक किया ना, दिस इज एज पर 48(2), एंड ये पहले वाला जो एड बैक किया ना, दिस इज एज पर 43(b). नाउ फ्रेंड्स, टेक द टोटल. व्हाट इज द टोटल? 5 lakh plus 6 lakh 40,000 plus 1 lakh plus 6 lakh plus 40 lakhs plus 7 lakh plus 5 lakh plus 3 lakhs. So are you all getting 73 lakh 40,000? Now in 73 lakh 40,000, when I add NP, I will get subtotal. So what is my subtotal? NP was 15 lakhs. So subtotal is 88 lakh 40,000. Okay, अब दोस्तों, next what you have to do is less items credited but not taxable under this head. Items credited but not taxable under this head slash specific allowances. Do you agree with me? Now what will you minus?
First, you will minus, you know what? First, we will minus what? That amount withdrawn from reval reserve. So, amount withdrawn from reval reserve is how much? Amount withdrawn from revaluation reserve credited to P&L account. It is 7,50,000. Next, agri income, because all of you know agricultural income is fully exempt. So agricultural income of 3,50,000. Then third point is nothing but deferred tax liability, because it is non-cash. It's not an actual income. It is just a bookish adjustment. So deferred tax liability is 4 lakhs. And then, my dear friends, depreciation assuming debited is as per IT Act, क्योंकि एक्स्ट्रा कुछ IT Act की इंफॉर्मेशन नहीं दी है. So depreciation assuming debited is as per IT Act. So 40 lakhs डेबिट किया है but minus 10 lakhs. Okay, but excluding on reval assets, excluding on revalued assets. Is it getting clear to all of you? So this is, my dear friends, 30 lakh rupees. अब इसके बाद क्या पेंडिंग है? Yes, वो unabsorbed depreciation brought forward from earlier years. आपको पता है unabsorbed depreciation can be carried forward for unlimited number of years. So unabsorbed depreciation brought forward. ओके, तो कुछ बिजनेस लॉस होता ना तो वो भी माइनस हो जाता इफ इट वाज विद इन 8 years, बट नहीं है, सिर्फ अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम अर्लियर ईयर्स. सो हाउ मच इट इज? 35 lakhs. So take the total, friends. 35 lakhs plus 30 lakhs plus 4 lakhs plus 3.5 lakhs plus 7.5 lakhs. So are you getting 80 lakhs, all of you, in the second column? अगर हम 80 lakhs माइनस करेंगे from 88 lakh 40,000, then what will happen? 88 lakh 40,000 minus 80 lakhs, it is 8 lakh 40,000. So are you all getting 8 lakh 40,000? So 8 lakh 40,000 is nothing but total income as per normal provisions. Are you getting this? Total income as per normal provisions. 8 lakh 40,000. Now on this 8 lakh 40,000, not asked, but we have, what we will do? We will calculate total tax liability also. So go ahead and write down B point, tax at the rate of 25%. Do you remember tax is at 25% for domestic companies? So tax at 25%, assuming turnover in PY, last to last PY. So 25-26, we are doing calculation for that. PY before that was 24-25, and so we have to take for 23-24. So turnover in PY 23-24 is not exceeding rupees 400 crores. So 25% of 8 lakh 40,000
which is 2,10,000, add surcharge not applicable. क्यों not applicable? As total income for company is not exceeding rupees 1 CR. तो surcharge कुछ नहीं है. Go ahead. Therefore, what is the subtotal? So subtotal is 2,10,000. Do you agree? Now friends, go ahead, add health and education cess at 4%. So are we getting 8,400? So finally, is the total tax liability as per regular provisions 2,18,400? Are you all comfortable till this point? तो ये आ गया नॉर्मल टोटल इनकम एंड उस पे टैक्स लायबिलिटी. अब चलते सी पॉइंट पे. सी पॉइंट इज व्हाट? सी पॉइंट इज बुक प्रॉफिट्स. देन यू कैन कैलकुलेट बुक प्रॉफिट्स अंडर सेक्शन 115 JB. So are you ready for calculation of book profits under 115 JB? Okay, particulars, amount rupees. Start with subpoint 1 NP as per P&L account. So NP as per P&L is 15 lakhs. So that's the starting point. Then go ahead. Subpoint 2, add. What will you add? You have to add items as per explanation 1 to section 115 JB. अभी आप क्या करना पता है? अभी आप आगे बढ़ना. अभी आप थोड़ा सम ऑब्जर्व करना और मुझे बोलना कि what is to be added as per 115 JB while computing book profits. Provision for income tax, yes, we have to add. मैं क्या बोल रहा हूं? Oh, thank you so much. Madhavi is saying thank you sir for this marathon. Thank you so much Madhavi for that beautiful comment. I would tell you Madhavi, it is my guarantee, it is my personal guarantee. आज आप 6 बजे तक बैठना and see the difference in the DT knowledge. Okay, and see the difference in your confidence. Yes, रवि कुंद्रा के इज आस्किंग सर इसमें खाली क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराओगे क्या? रवि कुंद्रा जी, टेक इट फ्रॉम दिस एस्पेक्ट कि प्रोविजंस आपको फटाफट बताना, उससे अच्छा क्या है क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको बातों बातों में प्रोविजन बताना. ओके, सो सी दिस इज द मेथड. जैसे मैंने आपको अभी बता दिया, डोमेस्टिक कंपनी के लिए टैक्स रेट इज 25%. फिट हो गया ना दिमाग में. एंड अगर टर्नओवर 23-24 में 400 करोड़ से ज्यादा होता, देन इट वुड हैव बीन एट 30%. अभी अभी मैंने आपको बता दिया कि सरचार्ज फॉर डोमेस्टिक कंपनी इज एट, यस, व्हाट परसेंट? 7%. इफ टर्नओवर एक्सीड्स, टर्नओवर नहीं, टोटल इनकम एक्सीड्स 1 CR, बट इफ टोटल इनकम इज अबव 10 CR, इट इज एट 12%. तो ऐसे बातों बातों में मैं आपको चीजें बताते जाऊंगा. ओके, यस, थैंक यू सो मच माधवी जी. चलो आगे बढ़ते हैं. देन एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स अमालगमेशन एंड ऑल, तो ये कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये अलाउ, मतलब ये ठीक है. बुक प्रॉफिट के वक्त इसका कुछ नहीं करना है. देन नेक्स्ट पॉइंट का भी कुछ नहीं करना है, तो नो इफेक्ट, नो इफेक्ट. प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज प्रोविजन फॉर अनएसर्टेन्ड लायबिलिटीज, वो करना है ऐड. देन कैश पेमेंट का कुछ नहीं करना है. देन बैंक टर्म लोन नॉट पेड का कुछ नहीं करना है. देन एक्सेसिव रेंट पेड का भी कुछ नहीं करना है. ओके, बट सिर्फ, यस सॉरी, डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट मिस किया. डेप्रिसिएशन एड बैक करना है क्योंकि माइनस होते वक्त माइनस होगा, यू नो, डेप्रिसिएशन डेबिटेड बट एक्सक्लूडिंग ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ
assets. ओके, अब रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स माइनस होगा, एग्री इनकम माइनस होगा बिकॉज इट इज फुल्ली एग्जाम, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी माइनस होगी एंड 30 लाख रुपीज माइनस होगा. कौन सा 30 lakhs? Depreciation debited excluding on the revaluation of assets. And then lastly, brought forward business loss or unabsorbed depreciation as per books of accounts, whichever is lower. So 22 लाख या 17 लाख, whichever is lower, ये माइनस होगा. गेटिंग इट? तो 17 लाख रुपए माइनस होंगे. Are you ultra comfortable? When you solve this, you will get book profit. And then go ahead and we will calculate what? We will calculate MAT. Okay, let's do it. So add items as per explanation 1 to section 115 JB. अब इसमें क्या क्या items आएंगे? First is provision for income tax. Provision for income tax, it is 5 lakh rupees. Next डायरेक्टली आने वाला है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स. प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, इट इज फ्रेंड्स 6 lakh rupees. Next, depreciation debited. It is going to be 40 lakh rupees. Okay, that's it. Add all these things. It's going to be 51 lakhs. Take total of 51 lakhs and 15 lakhs. It is going to be 66 lakh. So 66 lakh is our subtotal. अब माइनस होते वक्त क्या माइनस होगा? आइटम्स एज पर explanation 1 to section 115 JB. So what are the items as per explanation 1 to section 115 JB? First item है amount withdrawn from reval reserve. Amount withdrawn from reval reserve. Okay, credited to P&L account. So isn't it 7,50,000? तो 7,50,000 पहला माइनस होगा. दूसरा है एग्री इनकम. सो एग्री इनकम माइनस क्यों होगा? बिकॉज इट इज फुल्ली एग्जम्प्ट. बीइंग फुल्ली एग्जम्प्ट, तो इट इज 3,50,000. Then friends, go ahead. Third point, deferred tax liability. Deferred tax liability credited. तो unnecessary income बढ़ा हुआ दिख रहा है. It is a bookish adjustment. कोई एक्चुअल पेमेंट नहीं है ये, इसलिए वो लेस हो जाएगा 4 लाख रुपए. Then depreciation excluding depreciation on revaluation of assets. Depreciation excluding depreciation on revaluation of assets. So basically depreciation हमारा है 40 लाख, but उसमें से on revaluation of assets is 10 lakh. So 30 lakh rupees you will minus, and then you have brought forward business loss or unabsorbed depreciation as per books, whichever is lower. So isn't it 17 lakhs? So friends, can you take total of
all 7,50,000 plus 3,50,000 plus 4 lakhs plus 30 lakhs plus 17 lakhs. So am I getting 62 lakhs? Check. तो 62 lakhs आप माइनस करना कहां से 66 lakhs से. So you are getting 4 lakh rupees. 4 lakh rupees is our book profits. Are you comfortable? 4 lakh is our book profits. This is C steps answer. अब D step पे जाना which is MAT. All of you know MAT for companies is at 15%. So MAT at 15% of book profits. So 4 lakh ka 15% is how much? Isn't it rupees 60,000? Yes. Add surcharge. Okay, but not applicable. Why not applicable? Not applicable as book profit is less than or equal to rupees 1 crore. So surcharge dash हो जाएगा. So subtotal will be 60,000. Add health and education cess at 4%. So it is 2,400. So therefore total MAT is 62,400. Are you all comfortable? Are you getting 62,400? So last step, therefore tax payable. So company क्या टैक्स पे करेगी? टैक्स as per normal provisions or minimum alternate tax, whichever is higher. So are we all getting higher of normal tax? Normal tax was 2,18,400. So are you all ultra comfortable friends with this? So इस वे से आप मैट एंड बुक प्रॉफिट्स के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर? उसके साथ साथ आजकल 115 बीए के सवाल भी पूछने लगे हैं. सो व्हाट आई सजेस्ट यू नाउ इज वी विल गो अहेड एंड सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस ऑफ दैट. एंड उसके बाद ही मैं बोल सकता हूं कि टैक्सेशन ऑफ कंपनीज के आपके 15 से 20 मार्क्स पक्के हो गए. So are you ready guys for 115 BAA 115 BAB? इसको पहले नाम देता हूं इस नोटबुक को. नाम क्या देता हूं इस नोटबुक को? मैराथन. मैराथन CMA फाइनल DT जून 2026. इज दिस फाइन? चलो अब आपको क्विकली रिवाइज करवाता हूं 115 BAB. आर यू रेडी? उसके फिर क्वेश्चंस भी करवाऊंगा. Yes, Madhavi ji, are you following it? Sai Surya, you will get your answer within this batch. So stay tuned till 6 o'clock. अब आपके फ्यूचर के लिए इतना टाइम तो दे ही सकते हो, राइट? ऑल ऑफ यू. और जो आपको स्क्रीनशॉट लेने हैं ड्यूरिंग द बैच, टेक दो स्क्रीनशॉट्स. ओके, जो आपको लगता है उपयुक्त है, आपके लिए यूजफुल है, उसके स्क्रीनशॉट लेते चलो. चलो 115 BA टैक्सेशन ऑफ कंपनीज. अब 115 BA किन के लिए है? इट इज फॉर मैन्युफैक्चरिंग
डोमेस्टिक कंपनीज, उनके उनके लिए 115 BA. Company has been set up and registered on or after 1st March 26. Company is not engaged in any business other than business of manufacture. In short, company should be only in the business of manufacture. So, उस केस में टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट होगा? तो बहुत चीजें डिसअलाउ होगी. क्या क्या डिसअलाउ होगा? 10AA वाले एडजस्टमेंट्स, डिडक्शंस डिसअलाउ होंगे. मतलब SEZ का प्रॉफिट 32AC वाला डिसअलाउ होगा, 33AB वाला, 33AB वाला, ABA वाला, 35 साइंटिफिक रिसर्च, 35AC, 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस वाला, 35 CCC वाला, 35 CCD वाला, तो सब कुछ डिसअलाउ होगा. ओके, एंड ऑल्सो चैप्टर 6A डिडक्शंस विल बी डिसअलाउड. क्लियर? एक्सेप्ट 80JJAA. 80JJAA जो है फॉर एम्प्लॉइंग एडिशनल एम्प्लॉइज वही अलाउ होगा. ओके, एंड देन आपको सेट ऑफ भी नहीं मिलेगा ऑफ लॉस विच इज कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम द अर्लियर एवाई if that loss was attributable to any of the deductions referred above. Clear? Then depreciation under 32 मिलेगा आपको. ओके, बट 40% के आगे किसी एसेट पे डेप्रिसिएशन है तो 40% तक ही रेस्ट्रिक्ट होगा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 115BA में रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना है? रेट ऑफ इनकम टैक्स इज 25% प्लस सरचार्ज एट 10% प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. ये स्कीम जो है ना, ये स्कीम कंपल्सरी नहीं, ऑब्वियसली ये स्कीम ऑप्शनल है. तो इफ यू वांट देन ओनली यू कैन कम अप इन 115BA. ओके, चलो इतना समझ लो, आगे बढ़ते हैं. बट प्रैक्टिकली 115BA की स्कीम कोई भी नहीं लेगा. क्यों नहीं लेगा? क्योंकि इतने सारे चीजें डिसअलाउड है. वो सब डिसअलाउ होने के बाद टोटल इनकम विल बी ऑन अ वेरी हायर साइड. इस हायर टोटल इनकम पे rate of tax is 25% only and normal rate of income tax for company is also 25%. तो क्यों इतना करना है? तो 115BA वाला स्कीम वैसे देखा जाए तो प्रैक्टिकली इतना यूजफुल नहीं है. तो उसके सवाल पूछने के चांसेस भी कम है. बट 115BAA का स्कीम अच्छा है दोस्तों. 115BA का जो स्कीम है ना, टैक्स ऑन इनकम ऑफ सर्टन डोमेस्टिक कंपनीज, उसमें टोटल इनकम टू बी कंप्यूटेड विदाउट फॉलोइंग डिडक्शंस. विदाउट फॉलोइंग डिडक्शंस, तो ये डिडक्शंस कंसिडर नहीं किए जाएंगे व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग टैक्स एज पर 115BAA. 80JJAA एंड 80M का डिडक्शन मिलेगा, बट बाकी खास डिडक्शंस जो है ना वो नहीं मिलेंगे. एंड उनके बदौलत जो लॉस आया है कैरी फॉरवर्ड होके उसका भी डिडक्शन नहीं मिलेगा. देन डेप्रिसिएशन ऑफ सेक्शन 32 का डिडक्शन मिलेगा, लेकिन 40% से आगे किसी एसेट पे डेप्रिसिएशन है तो वो नहीं मिलेगा. इतना सब करने के बाद रेट ऑफ इनकम टैक्स हियर इज 22%. कितना है? 22%. बाकी के लिए कितना होता है? नॉर्मल 25%. यहाँ पे वो हो जाएगा 22%. बट याद रखना विथ कंपल्सरी सरचार्ज ऑफ 10%. ओके, प्लस ऑफ कोर्स हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. ये स्कीम भी ऑप्शनल है, एंड वंस दिस ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड इट कैनॉट बी withdrawn at any point of time during the PY, and it cannot be withdrawn only. ठीक है, during any PY. चलो अब आते हैं 115BAB पे. एंड बाय द वे जब 115BAA आपने लिया है तो 115JB मतलब मैट इज नॉट एप्लीकेबल. ओके, अब देखो 115BAB ये अच्छा है. ये न्यू मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक
कंपनीज के लिए है जो सेटअप होने चाहिए ऑन और आफ्टर 1/10/2019, okay, and they should have commenced manufacturing before 31st March 2024. आपको टोटल इनकम कैलकुलेट होगा ये सब डिसअलाउंसेस के बाद ही, बट 80 JJA 80M होगा अलाउ। तो सिमिलर है पहले दो सेक्शंस ऐसा ही, बट यहाँ पे रेट ऑफ इनकम टैक्स बहुत खास है, इट इज ओनली 15%, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। समझ में आया? यूजुअली नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स फॉर कंपनीज इज 25%, बट वो 25 के अगेंस्ट यहाँ पे कितना है, सिर्फ 15% है, बट कंपल्सरी सरचार्ज आएगा 10%, ओके। बट अदर इनकम्स देन मैन्युफैक्चरिंग विल बी टैक्सेबल एट 22%। मतलब आपका डिविडेंड इनकम है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स है, तो वो सब टैक्स होगा एट 22%, and STCG on transfer of depreciable asset will also be taxable at 22%. This scheme is optional, okay? हाँ, राहुल नहीं आएगा, नहीं आएगा, माय बैड। 115 BA में 10% का सरचार्ज नहीं आएगा, okay? If 115 BAB is selected, again 115 JB is not applicable. क्लियर? मैंने शायद फ्लो में बोल दिया, नहीं आएगा सरचार्ज 115 BA में। क्लियर? शैल वी गो अहेड? अब मुझे इस आरटीपी लिमिटेड का क्वेश्चन करना है जो कि एग्जाम क्वेश्चन है, विच आई हैव पुट हियर। तो आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन 115 BAB? जस्ट 1 सेकंड। जाजू जी एंड तक बने रहना, दैट्स इंपॉर्टेंट। जस्ट 1 सेकंड, शायद हमारा कनेक्शन गया है इसका टैब का, वापस रिट्राइव कर रहा हूं। कंफर्म, इज इट रिट्राइव्ड? कैन यू सी द टैब बैक? यस। या पता नहीं कैसे गया था। ओके, आरटीपी लिमिटेड कोलकाता domestic company incorporated and operational from May 2020. It has been assessed to tax as per normal provisions at 30%. तो normal provisions में उसका tax है 30%. The board of directors of the company क्या क्या बोल रहे हो? Yes, my pleasure, my pleasure. Thank you, राहुल जी। राहुल जी saying एंड तक रहूंगा सर आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग मैराथन सेशन। दोस्तों, आप जैसे स्टूडेंट्स की वजह से ही तो हमें बहुत उत्साह आता है, हमारा एंथुजियाज्म बरकरार रहता है। ओके, यस, वेरी गुड। द BOD of the company want you to take note of following data and suggest whether to continue the same or opt for section 115 BAB of the act. तो क्या करना चाहिए? 30% पे पे करना चाहिए या फिर 115 BAB में जाना चाहिए? दोनों में से क्या करना चाहिए? दैट इज द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड। ओके, अब देखो, कंपनीज इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर द ईयर एंडेड March 26 was 1500 lakhs, but it was before deduction of the following. Question is, assess total income and income tax liability as per normal provisions and under 115 BAB and suggest which one should be opted. तो दोस्तों, वो वाली स्कीम ऑप्ट करनी चाहिए जहां पे रेट ऑफ टैक्सेस, जहां पे ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी इज लेस। So let's go ahead, solve this. Friends, if and जहां पे आपको स्क्रीनशॉट्स लेने हैं ले सकते हो, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ आरटीपी लिमिटेड
ओके, पहले क्या करेंगे, नॉर्मल प्रोविजंस एंड 115 बीएबी साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, चलेगा? रुपीज इन लैक्स। अभी पहले नॉर्मल प्रोविजंस देख लेते हैं। 1500 1500 लैक्स के साथ स्टार्ट किया। 1500 lakhs was before following deductions. तो एडिशनल डेप्रिसिएशन का डिडक्शन लेना है when I am in normal provisions. Brought forward business loss का भी डिडक्शन लेना है when I am in normal provisions. तो नॉर्मल प्रोविजंस में मेरा पीजीबीपी स्लैश जीटीआई आ जाएगा 675 lakhs. उसमें से डिडक्शंस लेने वाले हो 80 JJAA के एंड 80 M के. 80M is nothing but intercompany dividend. ओके, मतलब मुझे एक दूसरे कंपनी ने डिविडेंड दिया और मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया डिविडेंड. अब जितना मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, ओके, उसके बेसिस पे माइनस हो जाएगा. सो डिडक्शन इज अलाउड अप टू अमाउंट ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड. तो डिविडेंड डिक्लेयर्ड और डिविडेंड रिसीव्ड विचएवर इज लोअर, ये माइनस होगा. तो टोटल इनकम आ गया 600 lakhs. अब 600 lakhs पे नॉर्मल टैक्स आएगा एट 30%. दे हैव टोल्ड यू रेट ऑफ टैक्स 30%. ओके, अब क्या होगा, 6 करोड़ है ना, 6 करोड़ हमारा टोटल इनकम है, मतलब इट इज एक्सीडिंग 1 करोड़. सो टैक्स इज गोइंग टू बी एट 7%. Surcharge will be at 7%. So 180 lakhs into 7%, 12.6 lakhs. अब 12.6 lakhs plus 180, 192.6 is the subtotal. उसका 4% will be health and education cess, which is 7.704. So friends, are we getting finally 200.304 the total tax? Yes or no? So that's guys your total tax as per normal provisions. Go ahead and do as per 115 BAB. 115 BAB में एडिशनल डेप्रिसिएशन का डिडक्शन नहीं मिलेगा, ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस का भी नहीं मिलेगा, assuming brought forward business loss incurs or is related to one of the not allowed things, तो नहीं मिलेगा. बट चैप्टर 6A के भी डिडक्शंस नहीं मिलते हैं एक्सेप्ट 80 JJAA which is for employing additional employees and 80M. तो दोनों का मिलेगा. तो 1500 में से 50 and 75 माइनस करो, 1425 will be our total income. So अभी 1425 पे 25% कैलकुलेट करना, सॉरी 115 BAB में हो तो कैलकुलेट करना 15% टैक्स. ओके, 1425 into 15%, 213.75, and of course सरचार्ज भी आएगा at 10%, always compulsory, so 21.375. So can you please tell me what is your final subtotal? 235.125 उस पे ऐड करना 4% health and education cess and you will get final tax as 244.53 lakhs. अब दोस्तों, which is lower that you will pay? So your final tax payable will be 200.304 lakhs. So it's good that you stay in the regular provisions. You should not opt for 115 BAB. Did you all get it, guys? So even though I am saying that we will solve all the questions, literally हर एक question solve करेंगे हम, तो 6 बजे तक complete करना possible ही नहीं है. So what we are doing, some of the questions we have already solved, we will just display the answer and discuss. But some questions we will solve literally.
चलेगा? So have you got this question of RTP Limited? Are you comfortable? Next. Next, what I want to do is on 115 BAA. तो अभी देखा 115 BAB का, अभी देखेंगे 115 BAA का. Ready all of you? Yes. Palam Limited Delhi is domestic company engaged in manufacturing activity. Following details relate to FY 25-26. Gross revenue is given. Manufacturing expenses are given, excluding additional depreciation, normal depreciation, additional depreciation, deduction of ATI, deduction of ATJJAA. Turnover never exceeded. Yes. 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 Turnover of the company never exceeded 400 crores in its lifetime. So in short, if you are paying as per normal provisions, then the rate of tax will be 25%. You are required to suggest the company whether it should opt for regular provisions or 115 BAA in order to minimize its tax liability. Clear? तो इन शॉर्ट दोस्तों यहां पे क्या करना होगा हमें, यहां पे हमें दोनों वे से कैलकुलेट करके उस पे टैक्स निकालना है. पलम इज द नेम ऑफ द कंपनी, सो गो टू पलम. Palam. So computation of tax liability for Palam Limited for AY 26-27. Okay, under normal provisions also and under 115 BAA also. So gross revenue from operation, पहले normal provisions पे focus करो. Of course, manufacturing expenses minus होंगे, normal depreciation minus होगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन भी माइनस होगा. आ गया पीजीबीपी स्लैश जीटीआई. अब दोस्तों डिडक्शन ऑफ चैप्टर 6A माइनस करना. एटीआई का 5 लाख, एटीजेजेए का 40 लाख. So 32 lakhs is the total income. And as you know, our turnover never exceeded 400 crores. So rate of income tax can be taken at 25%. So 32 lakhs का 25% will be 8 lakhs. And friends, surcharge नहीं आएगा. Sub total 8 lakh. Health and education says 32,000. 8 lakh 32,000 is the final tax. Did you follow it? And friends, if you go for 115 BAA, then you will get, of course, manufacturing expense का deduction. Normal depreciation का मिलेगा, लेकिन additional depreciation का deduction नहीं मिलेगा. Isn't it? Then go ahead, ATJJA का मिलेगा. So finally, check your total income will be 39 lakhs. Then don't forget, on 39 lakhs, here tax will be at how much percent? 22%. So which is 8 lakh 58,000. Don't forget, surcharge भी आएगा compulsory at 10%. So 943,800 will be subtotal, and on that health and education says at 4%, which is 37,752. So finally 9,81,552 is your what tax in 115 BAA. Now what is better for you? Normal is better because tax liability is lower. So it is beneficial to pay tax as per normal provisions of the Act. Okay, than under 115 BAB, as tax liability is lower in case of normal provisions. Did you all follow it?
BAA होना चाहिए. Did you all follow it, friends? 100%. Is it clear? Yes, absolutely, sir. Everything is clear. So this way, friends, in first 70 minutes, we have really given justice to the topic of taxation of companies. And I hope this secures your 15 to 20 marks in the exam. इसके साथ साथ आप और क्या करोगे, थोड़ा मैथ का फॉर्मेट और डिटेल में देख लेना. ओके, मैथ का फॉर्मेट डिटेल में देख लेना. और क्या देख लेना, पीजीबीपी का फॉर्मेट देख लेना, और क्या क्या एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं पीजीबीपी में. देन आई थिंक यू आर सॉर्टेड फॉर दिस टॉपिक. देन शैल वी गो टू नाउ टैक्स प्लानिंग. यस हर्ष जी, we'll go to tax planning now. Yes, let's go to tax planning. अब टैक्स प्लानिंग के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स है ना, वी विल फोकस ऑन देम फर्स्ट. तो अपना ब्रेक तक, ब्रेक 1 बजे ब्रेक होगा ना, तो ब्रेक के पहले कैन वी कीप द एजेंडा ऑफ कंप्लीटिंग एटलीस्ट टैक्स प्लानिंग? कैन वी कीप दैट एजेंडा? टैक्स प्लानिंग के 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन है. सो विल कीप दैट एजेंडा. ओके, सी देखो, टैक्स प्लानिंग, मैनेजमेंट, अवॉइडेंस, इवेजन, इस पे कभी कभी डिफरेंस पूछ सकते हैं, मतलब थ्योरी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. तो टैक्स प्लानिंग मीन्स नथिंग बट मिनिमाइजिंग टैक्स लायबिलिटी इन अ लीगल वे. मिनिमाइजिंग टैक्स लायबिलिटी इन अ लीगल वे is called as tax planning. Clear? Tax planning is, suggested. Tax planning is, desirable. Then tax management means nothing but better compliance with provisions of tax laws. तो टैक्स मैनेजमेंट के वजह से इंटरेस्ट कम हो जाएगा, अवॉइड हो जाएगा, पेनल्टी कम बैठेगी, फीस पे करने को नहीं लगेंगे. सो दैट इज टैक्स मैनेजमेंट. बेटर कंप्लायंस विद प्रोविजंस ऑफ टैक्स लॉज. टैक्स इवेजन इज इलीगल. टैक्स इवेजन मतलब टैक्स की चोरी. सो टैक्स इवेजन इज टोटली illegal. Getting it? Tax evasion should not be done. Tax evasion means illegally showing more expenses or illegally hiding the income so that tax liability is reduced. So tax evasion, if found out, is totally punishable. Clear? Then friends, tax avoidance means taking benefit of loopholes in the tax law. Okay, so again, if found out, it will be punishable. Tax avoidance, of course, is not desirable. That way, of course, tax evasion is also not desirable. Tax planning and tax management should be done. Clear? तो अभी कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आता है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि वेदर इट इज अ केस ऑफ टैक्स प्लानिंग, मैनेजमेंट और इवेजन. इससे आसान तो कोई सवाल हो ही नहीं सकता. You have to just identify whether particular case is of tax planning, management, avoidance or evasion. Are you ready? Identify. Shall we go ahead? All of you with me? Yes. चलो चलो चलो, मुझे क्या लग रहा है, ये देखो, फाइलिंग ITR before due date in order to carry forward business loss. क्या होगा? Which case this is? So this is a good tax compliance. So this is a case of tax management. तो आपको justify इतना ही करना है कि because it is
better compliance with provisions of tax laws, it is a case of tax management. Setting up of warehouse to avail tax benefit under 35 AD. So friends, this is a case of tax planning. Justification क्या लिखोगे? Since it is taking benefit of the tax laws by claiming deduction, it is a case of tax planning. It is totally within four corners of the law. It is totally legal. Next, payment of medical insurance premium of 45,000 for a parent whose age is 76. This is also case of tax planning. I am assuming that SSC is opting out of 115 BAC. So he can claim deduction under 80D. Is it clear to all of you? Rahul ji, is it clear? Next, collecting PAN details for contractors to whom TDS as per 194C is to be made. So this is of course tax management because it is compliance with the provisions of tax laws. पेई का पैन होना मैंडेटरी है. Next, recording in the books salary payment to J who is not actually employed by the SSC. So this is inflating of expenses. So this is a case of tax evasion. Paying advance tax installments in accordance with 211. So this is tax management. It is better compliance with provisions of tax laws. Gifting a property to major son in order to divert rental income so that it is taxed at lower slab. तो वैसे देखा जाए एक्चुअली तो इट इज टैक्स अवॉइडेंस बिकॉज यू आर टेकिंग बेनिफिट ऑफ लूपहोल इन द लॉ. तो एक्चुअली आपका ये क्या है, आपका इंटेंशन क्या है, आपका इंटेंशन टैक्स लायबिलिटी घटाना है. ओके, नॉट बाय एनी गुड लीगल प्रोविजन बट you are just gifting your property to major son so that अभी क्या होगा, he may not be earning that much income, so rental income will be taxed in his hands. So you know his slabs can be used there, so overall tax liability will go down. So tax avoidance. So this way I hope you will be able to do such questions. Now can we go to Amar's question? Are you ready for the Amar's question? Yes. अब देखो, very good Rahul ji, I can see your answers. Harshada, I hope it is clear to you. Okay, you can do that राहुल जी. चलो अब आगे बढ़ते हैं. तो आपका ओपिनियन लिख दो वहां पे. Amar, whose age is 35, owns 2 residential house properties, of which one is used for own residence, मतलब एक है self occupied and the other is let out. दूसरी कैसी है? Second is let out for monthly rent of 50,000. He bought these houses by taking loan from SBI. During 25-26, he paid interest on housing loan of 2,50,000 each for both the houses and total principal repayment of 2 lakhs. Each नहीं है, total है. He is doing business by name of Mercury Traders in which his income is 11,80,000. आपको क्या करना है? You have to determine his income as per 115 BAC
and as per regular provisions means when you are out of 115 BSE. Also suggest which one should be opted by Amar for AY 26-27. Of course, जहां पे tax liability is less. So shall we go ahead and solve? मजा आएगा ये क्वेश्चन करने में. आई होप जहां जहां पे चाहिए वहां पे अपने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं. लेट्स डू इट स्टेप बाय स्टेप. पहले क्या करते हैं, व्हेन इज आउट ऑफ 115 BSE, बट थोड़ा हमें ऐसे करना पड़ेगा कि वी विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द मेकिंग ऑफ फॉर्मेट. इज दैट फाइन? थोड़ा रफ में सॉल्व करके दिखाऊं. आई होप ऑल ऑफ यू आर ओके विद दैट. So this is क्वेश्चन नंबर, जो भी है आप क्वेश्चन नंबर भी डालना बाद में, बट जो भी है टैक्स प्लानिंग का है. So what to do? First, when you are out of 115 BSE, friends, when you are out of 115 BSE, हाउस प्रॉपर्टी में जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है उसमें इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन मिलेगा. ओके, अगर आप 115 BSE के बाहर हो तो क्या होगा? तो पहले तो हाउस 1 देखो. हाउस 1 जो कि लेट आउट है. अब हाउस 1 जो कि लेट आउट है उसके लिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज नथिंग बट रेंट रिसीव्ड. सो कैन आई से रेंट रिसीव्ड इज 6 लाख रुपीज. 50,000 इंटू 12, बाकी इंफॉर्मेशन नहीं है, माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड भी नहीं है, तो यही हो जाएगा नेट एनुअल वैल्यू. सो माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A, दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन. तो स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाएगा 1,80,000. क्लियर ऑल ऑफ यू? बट डोंट फॉरगेट there is interest on borrowed capital also. Interest on borrowed capital is 2,50,000. No ceiling limit because the property is what? Property is let out. So no ceiling limit. So 6 lakh minus 180 minus 250. So how much we are getting? We are getting 1,70,000. So friends, 1,70,000 is our what? Net income from HP. It is our net income from HP. अब दोस्तों HP हो गया. अब उसके बाद PGBP है अपने पास, बट एक और HP है, ये LO था. अब सेल्फ ऑक्यूपाइड HP भी है. सेल्फ ऑक्यूपाइड HP के लिए NAV is always nil less interest on borrowed capital, but you know it is 2,50,000, that is actual, or 2 lakhs whichever is lower. तो लिमिट है 2 लाख, तो 2 लाख वाला यहाँ पे क्या मिलेगा? डिडक्शन. सो लॉस फ्रॉम HP, लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड HP इज 2 लाख. तो फ्रेंड्स ऐसा होके हमारा net income from HP is how much? Net income from HP slash in bracket loss ही है, तो loss है 30,000 rupees. So can you put this in a box? 30,000 का loss है. अब आगे बढ़ना. इनकम फ्रॉम बिजनेस है, कितना है इनकम फ्रॉम बिजनेस? इनकम फ्रॉम बिजनेस है 11,80,000 given. So finally, what is our total income? So isn't our total income 11,50,000? Comfortable all of you? अब 11,50,000 है, सॉरी ग्रॉस टोटल इनकम है, क्योंकि हमने प्रिंसिपल भी रीपे किया है ना. यस और नो? तो ये तो अपना ग्रॉस टोटल इनकम है, लेस
डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। याद है ना, हमने प्रिंसिपल पे किया है हाउसिंग लोन का, प्रिंसिपल रीपेड फॉर हाउसिंग लोन, तो इजंट इट 1,50,000। पता है मुझे कि वो 2 लाख रुपए है, बट 2 लाख और सीलिंग लिमिट 1.5 लाख, विच एवर इज लोअर, तो ये माइनस होगा 1.5 lakhs and tell me, will our total income be 10 lakh rupees? अब 10 लाख पे क्या हम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं बाय ऑप्टिंग आउट ऑफ 115 BAC? तो टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? 0 टू एज क्या है एसएससी का? एज इज 35, so 0 to 2.5 lakh dash 2.5 lakh to 5 lakh, tax at 5%, and friends 5 lakh to 10 lakh, tax at what percent? 20%. So friends, total tax is 1,12,500. Are you all getting 1,12,500? Add 4% health and education cess. So it is 4,500. So finally, 1,17,000 is our tax liability. Do you agree? This is our tax liability. Yes, of course, Ashish Kumar ji. So are you getting 1,17,000? Yes. But दोस्तों, अगर हम 115 BSc में हैं तो क्या होगा? अगर हम 115 BSc में हैं तो HP इनकम सिर्फ लेट आउट प्रॉपर्टी का जो है वही कंसिडर किया जाएगा, विच इज 1,70,000, बिकॉज इफ यू आर हैविंग सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, उसका कुछ भी कंसिडर नहीं किया जाता इफ यू आर इन 115 BSc, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज नॉट अलाउड। तो एचपी इनकम 170 हो गया, और आपको पीजीबीपी पता है कितना है? पीजीबीपी इज 11,80,000, isn't it? So can you do 1180 plus 170? What is 170 plus 1180? Are we getting 13,50,000? Can I say 13,50,000 is GTI? Now from that, can we minus deduction under section 80C but dash, because we are in 115 BSc, we will not get any deduction under 80C. So friends, what is our total income? Is our total income 13,50,000? All of you got total income 13,50,000. तो अभी 13,50,000 पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे. How to do that? This is tax under section 115 BAC. 0 to 4 lakh dash 4 lakh to 8 lakh at 5%, 8 lakh to 12 lakh at 10%, 12 lakh to 16 lakh at 15%. तो दोस्तों यहाँ पे तो 13.5 लाख ही है, तो 13.5 लाख माइनस 12 लाख इंटू 15%, तो 1.5 लाख इंटू 15%, 22,500. 4 लाख टू 8 लाख ये सिर्फ 20,000 होगा. 8 लाख टू 12 लाख ये 40,000 होगा. So are we getting 82,500? अब 82,500 में आप ऐड करोगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट
4%. So isn't it like 3,300? Yes, very good. So finally, are we getting 85,800? So what is better? Better is you being in 115 BSc, because 115 BSc में only 85,800 is the liability. When you're out of 115 BSc, it is 1,17,000. Clear? So write your decision. Decision is better to pay tax under section 115 BAC in this case. Do you agree? In this case, as tax liability is lower as compared to where assessee is opting out of section 115 BSc. Is it 100% clear, guys, to all of you? Shall we go ahead? अरे यस आशीष, इसके भरोसे क्या क्लियर होगा? तो ऑफ कोर्स दिस इज अ टूल दैट फॉर गेटिंग क्लोजर टुवर्ड्स योर गोल. ये मैराथन में हम क्या क्या कवर करने वाले मैंने पहले वो आपको बताया है. तो कनेक्ट दैट विथ व्हाट यू हैव स्टडीड. ओके, आप फाइनल लेवल में हो, आप इवेल्युएट करना. मैं स्ट्रॉन्ग 21 to 22 क्वेश्चंस आपके सॉल्व करवाने वाला हूँ, जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से मेन एग्जाम में. उसके इर्द गिर्द भी आपको प्रोविजंस पता होने चाहिए एंड आपको एप्लीकेशन आना चाहिए उनका. देन ऑफ कोर्स यू कैन डिपेंड ऑन दिस मैराथन. चलो आगे बढ़ो दोस्तों. एक और सवाल मैंने कवर किया है, क्योंकि यही क्वेश्चन टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल्स का भी हो सकता है. तो यही कॉन्सेप्ट्स जब हम यूनिलैटरल रिलीफ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें भी यूज होंगे. तो इन शॉर्ट वी आर ट्राइंग टू डू आवर बेस्ट पॉसिबल रिवीजन वाया वेरियस क्वेश्चंस. ये क्वेश्चंस एक माध्यम है आपको सब कुछ रिवाइज करवाने का. क्लियर? चलो मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों. मुझे और एक क्वेश्चन सॉल्व करना है. किसका? तो अमर का हो गया. तो अपने 5 क्वेश्चन हो गए दोस्तों. 6th क्वेश्चन. वैसे देखोगे तो 6th और 7th ये हमने एजेंडा रखा है. मतलब आप देखोगे तो 1/3 of our questions will be done in first session. Then आधा घंटा break. Then next few questions. Then आधा घंटा break. And then few questions. This way we are going to do till 6 o'clock. Make sense? तो बहुत अच्छे से बैच स्ट्रक्चर किया है मैंने. Next, following are the details of income of Chaturvedi, whose age is 45 for PY 25-26. आपको क्या करना है? You have to compute total income and tax liability under regular provisions and under 115 BAC. Regular provisions मतलब when you are out of 115 BAC. Clear? And suggest which one is to be opted. Okay, so it's on similar lines. Salary income is given, but it is before standard deduction. Then self-occupied property, interest on housing loan given, interest on FD with Canara Bank, IFOS में जाएगा, सेविंग्स बैंक का भी IFOS में जाएगा. बट डोंट फॉरगेट क्या होगा, 80 TTA में डिडक्शन मिलेगा व्हेन यू आर आउट ऑफ 115 BAC. रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी 80 C में डिडक्शन मिलेगा. देन
हाउसिंग लोन प्रिंसिपल का भी डिडक्शन मिलेगा 80C में व्हेन यू आर आउट ऑफ 115 BAC एंड ये इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इंटरेस्ट ऑन borrowed कैपिटल डिडक्शन मिलेगा when you are out of 115 BAC that will be restricted to rupees 2 lakhs. So this way can we go ahead and can we do it for Chaturvedi? या चतुर्वेदी जी के लिए हम टोटल टैक्स लायबिलिटी निकाल सकते हैं? यस सर, लेट्स डू इट. चतुर्वेदी's क्वेश्चन. कैसे करेंगे? हाउ वी विल डू इट? A. So first what we'll do when we are in 115 or first when we are out of 115 BAC. चलो पहले आउट ऑफ 115 BAC देख लेते हैं. A. सैलरीज. हमारी सैलरीज है 8,20,000 बट हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा क्योंकि वो ग्रॉस सैलरी थी. सो स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a) ये हमें मिलेगा 50,000 रुपीज व्हेन वी आउट ऑफ 115 BAC. तो टैक्स होगा 7,70,000. ये हो गया नेट टैक्सेबल सैलरी. आफ्टर सैलरी HP. HP का हमें कुछ नहीं मिलेगा. क्यों कुछ नहीं मिलेगा? बिकॉज अच्छा बेटे सेल्फ ऑक्यूपाइड है ना, और HP का क्या दिया हुआ है? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का लॉस है. डिडक्शन नहीं मिलेगा व्हेन यू आर अच्छा इफ यू आउट ऑफ 115 BAC तो मिलेगा, व्हेन यू इन 115 BAC नहीं मिलेगा. सो HP लॉस 2 लाख रुपए तक मिलेगा. क्यों 2 लाख क्यों लिया? 2,20,000 और 2 lakhs विच एवर इज लोअर. ये इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन मिला. तो सैलरी हो गया, HP हो गया, PGBP कुछ नहीं है. अब IFOS है आपके पास. IFOS में इंटरेस्ट ऑन FD है. इंटरेस्ट ऑन FD इज 1,10,000. Then you have got interest on savings bank account, which you all know is 20,000 rupees. Take total 1,30,000 rupees. अभी आपको मिलेगा ग्रॉस टोटल इनकम. तो योर ग्रॉस टोटल इनकम विल बी 570 plus 130, 7 lakh rupees. Are you all getting 7 lakh rupees? E point less deductions under chapter 6A मतलब 80C to 80U. उसमें 80C वाले डिडक्शंस क्या है? कंट्रीब्यूशन टू RPF. तो कंट्रीब्यूशन टू recognized provident fund is given as 1,20,000 and then housing loan principal repaid is 80,000. Housing loan principal is 80,000. ये टोटल हो गया 2 लाख रुपए. Clear? But deduction is restricted to how much? But as you all know, deduction is restricted to rupees 1.5 lakhs. तो ये 1.5 lakhs का ही डिडक्शन मिलेगा. तो कितना आ गया? इसके बाद बट एक और डिडक्शन है, दैट इज सेविंग बैंक इंटरेस्ट. Isn't it? Just give me one moment guys.
Sorry guys. Is it clear till this point? आगे बढ़ू. हाँ, now 80 TTA का deduction मिलेगा, which you all know is restricted to rupees 10,000. Okay, so go ahead and tell me what is your total income. So total income is 7 lakh minus 150 minus 10,000. So isn't it 5 lakh 40,000? Yes. Now guys, go ahead and calculate tax liability. Go ahead and calculate tax liability. 0 to your age is 45. So 0 to 2.5 lakhs, no tax. 2.5 lakhs to 5 lakhs at 5%, 12,500. And lastly, 5 lakh to 10 lakh at 20%. So isn't it 5 lakh 40,000 minus 5 lakh into 20%? So isn't it 8,000 rupees? So are you getting 20,500 rupees? Add health and education cess at 4%. So aren't we getting 820 rupees? So finally, is our final answer 21,320? Yes, sir. It is 21,320. But this is when you are out of 115 BSc. Now what will happen if you are in 115 BSc? Directly solve करते हैं. Okay. Salaries. Salaries हमारा है 8,20,000. बट उसमें से सेक्शन 16(1)(a) का डिडक्शन मिलेगा 75,000. तो 820 minus 75,000 is 7,45,000. अब दोस्तों एचपी का डिडक्शन नहीं मिलेगा, देन क्योंकि इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन नहीं मिलता व्हेन यू आर इन 115 बीएससी. आईएफओएस में आपको पता है ये दो चीजें टैक्सेबल है. कौन सी दो चीजें? ये 1,10,000 प्लस 20 मतलब 130 ये टैक्सेबल है. द एंड दैट्स इट. तो यही आपका जीटीआई है, यही हमारा टोटल इनकम है. क्योंकि क्या नहीं है तो 8,75,000 आ गया. आर यू ऑल गेटिंग 8,75,000? Friends, point is we don't have any, we cannot claim no deduction under chapter 6A. Okay, when SSC is under section 115 BSc. Clear? Except मिलता है 80JJAA and 80CCD2, बट इसमें से यहाँ पे कोई भी नहीं है. तो 875 is the what total income. Can we calculate tax liability? How to calculate tax liability? 0 to 4 lakh dash, 4 lakh to 8 lakh
at 5%, which is how much? Which is 20,000. Agreed? And 8 lakh to 12 lakh at 10%. So friends, 8.75 lakh minus 8 lakh into 10%. So are you all getting 7,500? Can you take total? You will get 27,500. Now friends, but less rebate under section 87A as total income of individual under section 115 BAC is not exceeding rupees 12 lakhs. तो कितने का मिलेगा हमें रिबेट मिलेगा ऑफ 27,500 और 60,000 whichever is lower. So आपको रिबेट मिलेगा 27,500 का. I hope all of you remember this point of rebate. So tax liability हो जाएगी 0. So of course it is better to pay tax as per 115 BAC. समझा क्या सबको? So decision, pay tax under section 115 BAC as tax liability shall be nil. Comfortable? All of you? Shall we go ahead? Yes. Now towards last question for this segment. Then we will take a break of half hour. So in about 10 to 12 minutes, we should be done with that question. We are going absolutely as planned, isn't it? Yes. So जो next question है SGT लिमिटेड वाला वो सॉल्व करेंगे. वो फाइनेंसिंग ऑप्शन का क्वेश्चन है. Which financing option you should select? So there are 3 alternatives. Okay, तीनों alternatives में आप 60 लाख रुपए रेस करने वाले हो. You are going to raise 60 lakh rupees in all 3 options. Check. 20 plus 22 plus 18, 60 lakhs. 15 plus 20 plus 25, 60 lakhs. करेक्ट. अब पॉइंट ये है कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बिफोर टैक्स इज 30%. तो आप ईबीआईटी कमाने वाले हो 30% ऑफ 60 lakhs. रेट ऑफ डिविडेंड जाने दो, उससे कोई लेना देना नहीं है. बेसिक इनकम टैक्स इज एट 30%. तो 30% आप इनकम टैक्स माइनस करोगे. अगर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगाया तो 31.2% हो जाएगा इनकम टैक्स का रेट. Which alternative should the company opt with reference to tax planning for AY 26-27? अब दोस्तों ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए जहां पे रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल इज हाईएस्ट. मतलब ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए जिसमें इक्विटी शेयर होल्डर्स का सबसे ज्यादा फायदा होगा, बिकॉज दे आर ओनर्स ऑफ द कंपनी. Wonderful. I can see 27 of you have liked the session. Fantastic, fantastic. तो मुझे ये ऐसा समझ में आ रहा है कि एटलीस्ट 27 लोग इसका फुल फायदा उठाएंगे. एंड मुझे पता है रिकॉर्डेड वर्जन में और लोग देखेंगे. ओके. एक फैकल्टी को क्या चाहिए, एक इंस्टीट्यूट को क्या चाहिए कि अपना जो नॉलेज वो शेयर कर रहे हैं उसका फायदा मैक्सिमम स्टूडेंट्स उठाए. बस वही चाहिए. सच बोल रहा हूं, एकदम दिल से बोल रहा हूं. ओके. चलो, तो अब कैसे कैलकुलेट करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल? पहले कैलकुलेट करेंगे अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. उसमें से माइनस होगा इंटरेस्ट, बचेगा अर्निंग्स बिफोर टैक्स, माइनस होगा टैक्स,
बचेगा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, माइनस होगा प्रेफरेंस डिविडेंड, बट यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड है ही नहीं, तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, देन आप कंसिडर करोगे इक्विटी शेयर कैपिटल, तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100, दैट विल गिव यू रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, जहां पे रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल इन परसेंटेज टर्म्स हाईएस्ट है, वो ऑप्शन सिलेक्ट हो. चलो, shall we move ahead and calculate this? Yes, let's go ahead and calculate. Okay, so again I am doing rough working, so I am not giving the heading. So alternative 1, alternative 2, alternative 3. A point, earnings before interest and tax. So basically आपने 60 लाख रुपए लगाए हैं and you are expecting to earn 30% on that. Means in all options you are expecting to earn 18 lakh rupees. Whichever way you raise the funds, आपका EBIT 18 lakhs होगा. B point less interest. अब एक्चुअली पहले ऑल्टरनेटिव में आपने क्या किया है, 22 lakhs के डिबेंचर्स रेज किए हैं एट 15% एंड 18 lakhs का लोन लिया है, 18 lakhs का लोन लिया है एट 14%. तो 22 lakhs into 15%, 3,30,000 and 18 lakh into 14%, 2,52,000. Clear, all of you? And then in second option, देखो थर्ड में तो कुछ आपका लोन है ही नहीं, सेकंड ऑप्शन में 20 लाख का डिबेंचर है, तो 20 लाख इंटू 15%, 20 lakh into 15% is 3 lakhs and 25 लाख का 14%, 25 लाख का 14% पे है 3,50,000. So can you tell me what is your EBT, that is earnings before tax? So 18 lakhs minus 3,30,000 minus 2,52,000, you must be getting 12,18,000. Then 18 lakhs minus 3 lakhs minus 3,50,000, you must be getting 11,50,000 and then 18 lakhs. Clear? D point less tax. Tax is at what percent? I told you it is at 31.2%. So 31.2%, तो पहले केस में आएगा 3,80,000. If I round off to nearest of 10, 3,80,020. नेक्स्ट केस में आएगा 3,58,800 एंड नेक्स्ट केस में आएगा 5,61,600. So guys, can you tell me, after subtracting tax, you will get earnings after tax. How much will be that? So 12,18,000 minus 3,80,020, 8,37,980. Then 11,50,000 minus 3,58,800, 7,91,200, and finally 18 lakh minus 561,600, 12,38,400. This is earnings after tax available to equity shareholders. Okay, this is earnings after tax for
equity share holders or on equity share capital. Now, therefore, return on equity share capital in terms of percentage. So do you know what is the equity share capital? Equity share capital in first case is 20 lakhs. सेकंड केस में है 15 lakhs and last केस में है 60 lakhs. So find out in percentage terms. Yes, Devanshi. So return on equity share capital in percentage terms will be 837,980 divided by 20 lakh into 100. 837,980 divided by 20 lakhs into 100. So it is 41 point approximately 90%. Next, 791 200 divided by 15 lakhs into 100. Yes. So 52.75% approximately. And lastly, 12 lakh 38,400 divided by 60 lakh 20.64%. So which is the best alternative? Best alternative is second alternative. So can we write decision? Decision will be select alternative 2. Select alternative 2 as return on equity share capital is highest in the said alternative. So friends, is it helping you? We have solved strong 7 questions in detail in last 2 hours, and thus we have covered what? Thus we have covered, about 27 to 28 marks. So I hope you all are enjoying this session. And friends, after this, we will be doing business restructuring after the break. Clear? If you have not yet liked the session, please do like the session. Do subscribe to the channel. Do hit the bell icon. Okay? So I'm just writing here MEPL classes CMA final. Very good. Direct taxes marathon. Okay, CMA final, direct taxes marathon, break till 1:30. Is that fine? Break till 1:30 p.m. So friends, I'll see you back at dot 1:30. ज्यादा मत खा के आना क्योंकि नहीं तो नींद आएगी. Digestive system works that way. So be aware, stay hydrated, and stay energetic. I'll see you at dot 1:30.
Friends, I am back. Are you there? Just confirm. I'm just putting back all the things in place because the tab was charging. I'm putting the tab now, and I'm also going to check your chat windows in between. Please tell me whether I'm systematically visible to all of you and audible. Yeah. Can you confirm? Can you mark your present back? Friends, welcome back to this session. Let us continue. Yes, Yaksha Priya has marked the presenting. Let's continue, guys. Next question. So now we are doing business restructuring. Okay, very nice questions of business restructuring. Okay, slump sale. The question on slump sale. Okay, we are onto that. The division, so slump sale in business restructuring. Following is the balance sheet of VV Limited as on 31st March 26, on which date the fertilizer division was transferred. Which division is sold? The fertilizer division is sold by way of slump sale for consideration of 300 lakhs. So friends, FVC is 300 lakhs. Okay, of which division? Of fertilizer division. Okay, this division, of which fixed assets are 500 lakhs, other assets are 400 lakhs, and liabilities are 500 lakhs. So all of you know how to calculate, the capital gains in case of slump sale. First, to identify this division is in existence for how many months. So see the additional information. Fixed assets of fertilizer division include land which was acquired for 40 lakhs. So friends, 40 lakhs is the cost of the land and revalued at 100 lakhs. So you are not going to take 100 lakhs. Out of this 500 lakhs, land is 40, land is 100 lakhs. But against that 100 lakhs, you are going to take only 40 lakhs. Rest of the assets are 400 lakhs. Okay. Now see, other fixed assets of fertilizer division represent their WDV as per books. But we don't want to take WDV as per books. We want to take WDV as per Income Tax Act. So WDV as per Income Tax Act is 320 lakhs. So you will take that 320 lakhs. So 320 plus 40 will be your total of assets. Because what has happened is there's a slump sale. So in slump sale, FVC we have got. So what FVC you should take? You should take FVC as actual selling price or fair market value of the assets, whichever is higher. There is no fair market value of the assets given. So you will have to take 300 lakhs as FVC. There is no expense on transfer. So that itself will become NSC. अब दोस्तों इसमें से NST में से माइनस करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट.
But cost of acquisition and cost of improvement for slump sale, for slump sale, it is nothing but, the net worth of the undertaking. Now, net worth of the undertaking is assets minus liabilities. Now, in assets, the fixed assets you will take the depreciable assets at WDV as per Income Tax Act, but non-depreciable assets like land and all, you will take excluding effect of revaluation. So 360 is the value of assets, and friends, other assets 400 lakhs represent book value of non-depreciable assets. So you will have to take them at 400. So 360 plus 400 is 760, and from that minus liabilities of 500. 760 minus 500, 260 becomes our what? 260 becomes our net worth. So 260 becomes cost of acquisition and cost of improvement. 300 is FVC minus 260 cost of acquisition and cost of improvement. So 40 lakhs is our capital gain. And it is given that fertilizer division is operational from 1st Jan 23. And friends, it is sold on 31st March 26, means it is in existence for more than 36 months. So if it is in existence for more than 36 months, the resultant gain will be long-term capital gain. Clear? So that is the question. Let's go ahead and do the presentation. Okay? So it is a question of slump sale. I will just show you rough working. Okay? I am just showing you rough working. With me, all of you? So, A point, full value of consideration, rupees in lakhs. So, it is 300 lakhs, being actual sale price or fair market value of assets of division or unit sold. Okay? B point, less. So this itself becomes net sale consideration because there is no expense on transfer. Less cost of acquisition and cost of improvement. This is nothing but net worth. It is nothing but net worth of division transferred. So of course, for this we will do working note. So isn't it 260? So we'll find it by working note. So C point, therefore, LTCG under section 50B. Slump sale is discussed in 50B. So you must be getting 40 lakhs. Already we have written rupees in lakhs. Clear? So can we do now cost of acquisition and cost of improvement? Cost of acquisition, cost of improvement. Okay. This is the note. So cost of acquisition, cost of improvement is nothing but net worth of fertilizer division or fertilizer unit. Agreed? In that, go to assets. Under assets, you have first one. Which is the first one you have in assets?
You have land. Land will be taken at original cost. Original cost excluding effect of revaluation. So isn't it 40 lakhs? Again, it is rupees in lakhs. So isn't it 40 lakhs? Yes. Go ahead. Then after land, you have got other fixed assets. Other fixed assets excluding land at WDV under section 43(6) as per IT Act. As per IT Act. So basically, it is given as 320 lakhs. Okay, then you have got other fixed assets. Other fixed assets which are non-depreciable. It's given in the balance sheet. Balance sheet में क्या दिया हुआ है? 400 lakhs. So take the total of assets. 760 lakhs is total of assets. From total assets, you minus liabilities. You minus liabilities, which is 500. So 260 is net worth. All of you got net worth 260. And then friends, just write one note that since fertilizer division is operational from 1st Jan 2023, from 1st Jan 2023 and sold on means transferred on 31st March 2026, that is in existence for more than 24 months, the resultant capital gains is long-term capital gains. Is it clear to all of you? Shall we go ahead? Yes, sir. So slump sale is clear to us. Let's go ahead. Amalgamations question. तो इससे amalgamation के हर provision रिवाइज हो जाएंगे. Question is of AB Private Limited. Okay, चलो let's start. AB Private Limited, an Indian company having 5,000 shares of 100 per share. That means shares of 5 lakh is engaged in producing edible oil and processing foods. It is decided that AB Private Limited will be amalgamated with CD Private Limited with effect from 1st March 2026. Total consideration is 9.75 lakh for transfer of the assets, where capital assets are of 6 lakhs and जहां पे net current assets is 3.75 lakhs. Consideration is to be satisfied by issue of 3 equity shares of CD Private Limited at 130 per share for every 2 equity shares of AB Private Limited. ऐसा वो consideration है. One Mr. Ganesh, who has 700 equity shares in AB Private Limited, which were acquired in FY 1920 for 2 lakhs,
मिस्टर गणेश रिसीव्ड, तो ऑफकोर्स एबी प्राइवेट लिमिटेड के 700 शेयर्स के अगेंस्ट मिस्टर गणेश को मिले 1050 इक्विटी शेयर्स फ्रॉम सीडी प्राइवेट लिमिटेड consequent to the amalgamation in March 26. Against the above backdrop, you are required to answer the following questions. Does this transaction of amalgamation attract any income tax liability in hands of that transferor, that is AB Private Limited? The answer is no. No tax on amalgamation. You know, it is considered not as transfer. So in AB Private Limited's hands, there will be no tax. Compute capital gains in hands of Ganesh on receipt of shares of CD Private Limited. तो क्या हुआ, गणेश ने उसके 700 शेयर्स दिए, उसको उसके अगेंस्ट 1050 शेयर्स मिले, तो इसमें भी कोई कैपिटल गेन्स नहीं है. नेक्स्ट, कंप्यूट सीजी इन हैंड्स ऑफ गणेश इफ ही सेल्स शेयर्स ऑफ सीडी प्राइवेट लिमिटेड, मतलब नए कंपनी के 600 शेयर्स, सॉरी सब शेयर्स बेचे एट 600 पर शेयर. सो 600 into each shares price is, sorry, 1050 शेयर्स. सो 6,30,000 रुपए को अगर सब शेयर्स बेच दिए तो कैपिटल गेन कितना होगा गणेश के हाथ में. सो 6,30,000 को बेचे बिकॉज 1050 शेयर्स इंटू 600 शेयर्स. एंड ये जो शेयर्स है गणेश ने खरीदे थे फॉर 2 लाख रुपीस, मतलब सीडी के नहीं, एबी प्राइवेट लिमिटेड के. तो वही 2 लाख रुपए उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा और 4,30,000 हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स. देन will sale of shares of CD Private Limited by Mr. Ganesh affect the tax benefit if any availed by AB Private Limited? तो ऐसा कुछ नहीं होता. Individual shareholder can do whatever he want. Suggest any investment plan for Mr. Ganesh to mitigate his tax liability. तो आपको पता है कि अभी selling any asset, any long-term capital asset other than house, because he's selling shares. So on that, for saving tax on this LTCG of 4,30,000, he can invest it in one house in India. Then he can claim under 54F. Clear? That's it. तो ऐसा 8 मार्क्स का सवाल पूछा था जून 16 में. So with this, amalgamation's concept gets clear. That's why I wanted to solve this question. So shall we go ahead and solve it in detail? Are you ready? तो amalgamation का ये question solve करते हैं, but if possible rough working ऐसा ही लिखता हूं मैं, ताकि मैं सिर्फ important points आपको बता सकूं. तो इसमें 5 सब क्वेश्चंस पूछे गए थे. So this is the first sub question. Transfer in the scheme of amalgamation. Transfer in a scheme of amalgamation of capital asset by the amalgamating company is exempted from levy of tax. Is exempted from levy of tax on CG, on capital gain, provided amalgamated company is an Indian company. Provided the amalgamated
company is an Indian company. Clear? आगे बढ़ते हैं. Therefore, a transaction of amalgamation does not attract any tax liability. Therefore, transaction of amalgamation does not attract any tax liability. Any tax liability in whose hands? In the hands of AB Private Limited. In hands of AB Private Limited. चलो आगे बढ़ो. Sub question 2. See, any transfer by shareholder in a scheme of amalgamation of shares, in a scheme of amalgamation of shares of amalgamating company held as capital asset is not liable to capital gains tax. Is not liable to capital gains tax if the transfer is made in consideration. If the transfer is made in consideration of allotment to him of any shares in amalgamated company, of any shares in amalgamated company. क्लियर? तो ऐसे केस में कोई टैक्स नहीं है उसके हाथ में. And the amalgamated company is an Indian company. And the amalgamated company is an Indian company. तो क्या प्रूव हुआ यहाँ पे? उस गणेश को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा. Thus, there is no need. Thus, there is no capital gains. Thus, there is no capital gains hands of Ganesh, in hands of Ganesh on receipt of shares of CD Private Limited. On receipt of shares of CD Private Limited. Did you all understand? No CG in hands of Ganesh on receipt of shares of CD Private Limited. And उसके पहले amalgamation does not attract any tax liability in hands of AB Private Limited. चलो आगे बढ़ू दोस्तों. Then गणेश ने वो जो शेयर्स बेचे ना बाहर, उसके लिए पक्का कैपिटल गेन आने वाला है. वो थर्ड पार्टी को बेच दिए ना नए कंपनी के शेयर, तो आने वाला है कैपिटल गेन्स. तो CG in hands of Ganesh, CG in hands of Ganesh on sale of shares of
CD प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो करेंगे कैलकुलेट अभी। A पॉइंट FVC फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, सो 1050 शेयर्स है इंटू 600 रुपए ईच, तो इजंट इट 6,30,000? Yes. Then friends, B point, so this is FVC slash NSC. अब B point less COA, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो कि है 2 लाख रुपए। क्यों 2 लाख रुपए है? बिकॉज दैट वाज द परचेज प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ AB प्राइवेट लिमिटेड एंड देयरफॉर LTCG आएगा 4,30,000। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस गाइस? अब लिखना नोट्स। फर्स्ट वन, cost of shares of amalgamating company, cost of shares of amalgamating company is to be taken as cost of shares of amalgamated company, इसलिए वो 2 लाख लिया है। ओके, देयरफॉर रुपीज 2 lakhs। समझा क्या? सेकंड नोट, पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ शेयर्स इन amalgamating company, हाँ, पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ शेयर्स इन amalgamating company, मतलब पहले वाली कंपनी AB is included for computing period of holding, is included for computing period of holding of shares in the amalgamated company, of shares in amalgamated company। समझा क्या? Therefore, ये देखो पहले वाली कंपनी ने अपने शेयर्स कब खरीदे थे? एज अ गणेश 1920 में। Therefore, from 2019-20 टू अभी अभी बेचे, कब बेचे? अपने एग्जाम्पल में 31st March 2026, that is more than 24 months, therefore LTCG। clear? and lastly, indexation benefit क्यों नहीं लिया हमने? because asset is transferred on or after, for assets transferred on or after 23rd July 2024, no indexation benefit is allowed. No indexation benefit is allowed. Clear? मतलब हाउस वगैरह के लिए मिलता है, बट यू नो शेयर्स के लिए वगैरह नहीं मिलता। क्लियर? सो दिस कंप्लीट्स आवर थर्ड सब क्वेश्चन इन दिस। नाउ फोर्थ सब क्वेश्चन, वो पूछा था कि अगर इस गणेश ने सीडी लिमिटेड के शेयर्स बेचे तो क्या एबी लिमिटेड को एग्जम्पशन ऑफ कैपिटल गेन्स लेने में कोई दिक्कत आएगी? तो आंसर इज नो। So there is no provision in Income Tax Act. There is no provision in Income Tax Act which affects
the tax benefits availed which affects the tax benefits availed by the amalgamating company by the amalgamating company. Okay, in the event of sale of shares of in the event of sale of shares of amalgamated company. क्लियर, कुछ इफेक्ट नहीं होगा, बेचने दो. एंड लास्टली क्या पूछा था, लास्टली पूछा था कि गणेश जी ने जो 4,30,000 रुपए कमाए हैं एलटीसीजी, क्या वो एग्जम्प्ट हो सकते हैं? तो आंसर इज यस. सेक्शन 54F. ओके, मिस्टर गणेश can avail exemption under section 54F. Okay, by investing NSC, means net sale consideration of rupees 6,30,000 in a house within 2 years from date of transfer. From date of transfer of shares. Clear? Yes. Exemption will be equal to exemption will be of entire LTCG of rupees 4,30,000 if amount invested is rupees 6,30,000 और more. याद है क्या? तो अगर आपने एनएससी या उससे ज्यादा इन्वेस्ट किया तो एंटायर एलटीसीजी का एग्जम्पशन मिल जाएगा. ओके, सो एग्जम्पशन विल बी एंटायर एलटीसीजी if amount invested is 6,30,000 or more. But if amount invested is less than or equal to rupees 6.3 lakh, that is NSC, then exemption will be on proportional basis. Then exemption will be on proportional basis. Clear all of you? Yes. Proportional basis कैसे? LTCG multiplied by amount invested divided by net sale consideration. ठीक है? So friends, this way we complete this question of amalgamation. आशा करता हूं समझ में आया है. अब आगे बढ़ता हूं on a question of ABC and company. Sorry. अब चलता हूं on a question of ABC and company, which is of conversion of partnership firm into company. Are you ready for this question? All of you? Yes. ABC and company, a partnership firm, got converted
into ABC Company Limited, मतलब firm is converting into company on 1st September 25. It furnishes you details for the year ended 31st March 26. कुछ कैलकुलेशन के लिए डिटेल्स भेजे हैं. अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन 15 लाख है, which relates to AY 2021. बिजनेस लॉस है 20 लाख, which relates to AY 18-19. Unadjusted AMT credit है of 2 lakhs, which is of 25-26. Then WDV of assets under Income Tax Act is given. Plant and machine का दिया हुआ है 20 lakhs. Plant and machine, but उसका डिडक्शन क्लेम किया गया 35 AD के अंदर. फैक्ट्री बिल्डिंग 30 lakhs. क्लियर. कॉस्ट ऑफ लैंड 50 lakhs. मार्केट वैल्यू जाने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता. बैड डेट्स रिटर्न ऑफ इन AY 21-22, मतलब पार्टनरशिप फर्म ने बैड डेट्स राइट ऑफ किए थे 8 लाख के. नाउ दे आर रिकवर्ड इन December 25 टू द एक्सटेंट ऑफ 6 लाख. अब आपको एक्सप्लेन करना है टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ ईच ऑफ द आइटम्स गिवन अबव इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी. कंपनी मतलब जो नया कंपनी फॉर्म हुआ है ना, उनके हाथ में. ऑन द assumption that all conditions laid down in 47(3) are satisfied. जब भी आपको 47 दिखता है, it means conversion of one entity into another entity where such transfer is not regarded as transfer. तो उसमें कैपिटल गेन्स नहीं आता. क्लियर. अब स्टेप बाय स्टेप देखते. अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का क्या होगा? तो नो प्रॉब्लम, इट विल बी एलिजिबल फॉर सेट ऑफ. देन बिजनेस लॉस 18-19 का है. So 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26, 26-27. तो ये लास्ट ईयर है, सेट ऑफ हो सकता है because it is allowed to be set off for 8 years, isn't it? Yes. Then ये 8th year है तो सेट ऑफ हो सकता है. Okay. Then unadjusted AMT क्रेडिट का कुछ नहीं होगा, it will lapse. WDV ऑफ एसेट्स, तो यहां पे क्या होगा? डेप्रिसिएशन क्लेम करेगी कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज कंपनी हैज यूज्ड दिस एसेट्स इन द ईयर. तो वैसे देखा जाए तो कंपनी एग्जिस्टेंस में आ गई 1 अप्रैल 25 से, सॉरी 1 सितंबर 25 से. तो सितंबर के 30 दिन, अक्टूबर के 31 डेज, नवंबर के 30 डेज, दिसंबर के 31 डेज, जैन के 31 डेज, फेब के 28 डेज, मार्च के 31 डेज. सो 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 28 प्लस 31. सो 212 डेज कंपनी इज इन एग्जिस्टेंस. तो कंपनी डेप्रिसिएशन लेगी 212 डेज का, 212 डेज का. Clear? And then our firm will be able to claim depreciation of balance 153 days. बस तो ये डिवाइड हो जाएगा. एंड देन बैड डेट्स जो फर्म को हुए थे, फर्म ने राइट ऑफ किए थे. अब अगर कंपनी ने क्या किया है, अब अगर कंपनी ने कंपनी बनने के बाद वो रिकवर हुए हैं तो वो टैक्सेबल हो जाएंगे. तो ऑफकोर्स वो टैक्सेबल हो जाएंगे अभी कंपनी के हाथ एज अ डीम्ड इनकम. बस तो ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप अभी फॉर्मली लिखते हैं. हैव यू ऑल अंडरस्टूड? तो कैन आई से दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू कंपनी. तो देखो ना, इन क्वेश्चंस के द्वारा ये कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से रिवाइज हो रहे हैं. गेटिंग इट? फर्स्ट पॉइंट, unabsorbed
depreciation. So it is eligible for set off. Unabsorbed depreciation even of firm is eligible for set off in the hands of successor company, as though the depreciation belongs to as though the depreciation belongs to the successor company. Clear? Then second, business loss. दोस्तों अगर अमालगमेशन वगैरह हुआ ना तो उस साल से वो लॉस के नया बिजनेस लॉस का नया 8 इयर्स का स्पैन चालू होता है, बट नॉट इन केस ऑफ सच कन्वर्जन. तो बिजनेस लॉस ऑफ predecessor मतलब ट्रांसफर is eligible for set off by the successor, means by the company up to 8 years, up to 8 years. In this case loss was incurred in AY 1819. Loss was of AY 18-19, okay, and AY 26-27 would be 8th AY, would be 8th AY or 8th year for set off of brought forward loss. For set off of brought forward loss. इसलिए क्या कंक्लूड किया हमने? Therefore, brought forward loss can be set off in this case. Therefore, brought forward loss can be set off in this case. Do you all agree with me on this? Yes, sir. Then friends, AMT credit. वो थर्ड पॉइंट है AMT क्रेडिट वाला. The AMT credit brought forward, AMT credit brought forward, क्या उसका कुछ हो सकता है मैट के अगेंस्ट? आंसर इज नो. The AMT credit brought forward by firm is not eligible for credit, is not eligible for credit upon conversion into company, upon conversion into company. ओके, बट एक समझ लेना, वाइस वर्सा होता, मतलब कंपनी का मैथ क्रेडिट होता and company would have been converted to firm, then it was allowed to be set off. However, तो वो भी लिख लो पॉइंट. However, the vice versa, that is a company when converted into firm is eligible for such credit, is
eligible for such credit. Okay. Next, fourth, depreciation on assets. The most common question, depreciation on assets or of assets. तो बेसिकली फर्म को कितना मिलेगा और कंपनी को कितना मिलेगा. सो फर्म एंड कंपनी, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया ड्यूरिंग पीवाई 25-26 फर्म इज देयर ना. फर्म के लिए इट इज फॉर हाउ मेनी डेज वी कैलकुलेटेड 212 हमने कैलकुलेट किया इसके लिए कंपनी के लिए 212 डेज. तो 153 डेज फर्म के लिए है. क्लियर. अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप. ऑन प्लांट एंड मशीन. अब प्लांट एंड मशीन जो है ना उस पे ऐसे दिया था 20 लाख का प्लांट एंड मशीन का WDV है. तो 20 लाख इंटू 15% विच इज इक्वल टू रुपीज 3 lakhs. तो फ्रेंड्स फर्म को मिलेगा 3 lakhs इंटू 153 अपॉन 365 एंड कंपनी को मिलेगा 3 lakh इंटू 212 upon 365. So what is 3 lakh upon 365 into 153? Isn't it 1,25,753? Check. And company को मिलेगा 3 lakh divided by 365 into 212 1,74,247. Do you all agree? ये हो गया प्लांट एंड मशीन का. नेक्स्ट वॉज जिसका 35 आईडी कार्ड ऑलरेडी डिडक्शन क्लेम हुआ है तो उसका तो कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं मिलता क्योंकि ऑलरेडी 100% हैज बीन क्लेम्ड एज डिडक्शन. फैक्ट्री बिल्डिंग. फैक्ट्री बिल्डिंग है ना पे मिलेगा ना. फैक्ट्री बिल्डिंग जो है दैट्स WDV इज 30 lakhs. So 30 lakhs into 10%. Again, depreciation is 3 lakh. तो सेम अपोर्शनमेंट होगा एंड 125,753 and 174,247. So friends, what is therefore total depreciation? क्योंकि नेक्स्ट तो लैंड है, लैंड पे तो कुछ डेप्रिसिएशन नहीं मिलता. तो 125,753 plus 125,753 2,51,506 एंड वहां पे 174,247 plus 174,247 3,48,494. Are you all getting it, guys? Yes. उसके बाद कॉस्ट ऑफ लैंड जैसे डिस्कस किया हमने, ये फोर्थ होगा या फिफ्थ होगा? फिफ्थ. यस फिफ्थ. कॉस्ट ऑफ लैंड वैसे का वैसा लेंगे. इन हैंड्स ऑफ सक्सेसर कंपनी, इन हैंड्स ऑफ सक्सेसर कंपनी ओरिजिनल cost of original acquisition cost of predecessor firm, original acquisition cost of predecessor firm would be adopted, would be adopted, would be adopted as far as cost of land is concerned.
Clear? Continue. And when, yes, clear. एंड लास्टली क्या है दोस्तों, लास्टली वो बैड डेट्स है, बैड डेट्स रिकवर्ड. सो बैड डेट्स रिकवर्ड का क्या हुआ है, amount of bad debt recovery of successor, amount of bad debt recovery of predecessor is chargeable to tax in hands of successor, that is company, as deemed income, as deemed income under section 41(4) of Income Tax Act. ठीक है, so this completes, you know, amalgamation तो पहले ही हुआ था. Yes, this completes next conversion of firm into company. चलो आगे बढ़ते हैं. जो नेक्स्ट है ना, दैट इज ऑफ डीमर्जर. ओके, सो आई थिंक डीमर्जर का मैं एकदम एंड में करता हूं इफ टाइम परमिट्स. इज इट फाइन? बिकॉज मैं देख पा रहा हूं स्टूडेंट्स को बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग टॉपिक कंफर्टेबल है आई थिंक, बिकॉज यस नंबर्स इन्वॉल्व नहीं है इतने, तो आई थिंक इट्स कंफर्टेबल. तो आई डोंट थिंक स्टूडेंट्स नीड दिस टॉपिक. प्लीज लेट मी नो इन द चैट विंडो क्या आपको डीमर्जर का सवाल चाहिए, और शुड वी गो टू डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स के क्वेश्चंस. व्हाटएवर इट इज, लेट मी नो गाइस. ओके, आई थिंक कर लेते हैं डीमर्जर का. परीक्षित लिमिटेड कोलकाता is a domestic company with two divisions, namely textile and automobile. The board of directors of company decided to hive off, means अलग करना, textile division by way of demerger. तो अभी textile division की अलग कंपनी बनेगी. Net book value of assets of textile division before demerger was 50 crores. And the total book value of the company's assets was 150 crores. The scheme of demerger was approved with allotment of 5 equity shares of 10 each fully paid from the buying company कोटा लिमिटेड. तो कोटा लिमिटेड को ये टेक्सटाइल यूनिट दिया जाएगा एंड उसके अगेंस्ट कोटा लिमिटेड देगी 5 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each fully paid. Okay, the demerger was made in December 25. Burman is one of the shareholder of Parikshit with 2,000 equity shares acquired for 8,40,000 in 21-22. He sold all the shares received from Kota Limited, मतलब जो नए कंपनी के शेयर्स मिले वो सब बेच दिए in March 2026 for 30 lakh rupees. तो needless to say बुरमन जी का प्रॉफिट हुआ 30 लाख माइनस 8.4 lakhs एंड ये हुआ LTCG, दैट इज 21,60,000. ये LTCG हुआ. क्वेश्चंस क्या है? इज द ट्रांजैक्शन ऑफ डीमर्जर ऑफ टेक्सटाइल डिवीजन बाय परीक्षित लिमिटेड अट्रैक्ट एनी टैक्स? नो टैक्स. एंजॉय.
हाउ मच इज कैपिटल गेन्स इन हैंड्स ऑफ बुलमैन, तो वो 21,60,000 जो अभी निकाला, दैट विल बी LTCG. कंप्यूट CG ऑन ट्रांसफर ऑफ, अच्छा सॉरी माय बैड, पहले पूछा था एक्सचेंज के लिए, तो एक्सचेंज के लिए नो टैक्स. परीक्षित लिमिटेड के शेयर्स गए और कोटा लिमिटेड के शेयर्स आए, इसके लिए कोई टैक्स नहीं लगेगा. बट CG ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ कोटा लिमिटेड, यहाँ पे 21,60,000. Does the sale of share by Bullman have any implication in the demerger undertaken by Parikshit Limited? Straightforward answer is कुछ फर्क नहीं पड़ता. No. बुलमैन मतलब एक शेयर होल्डर कुछ भी करे, उससे ओवरऑल एंटिटी के टैक्सेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता. यस, वेरी गुड वेरी गुड. नम्रता शेलार जी, हैव यू फॉलोड फ्रॉम द बिगिनिंग? हाश दलित जी. So shall we go ahead and just quickly present this? Then we would be more than halfway mark, क्योंकि हमारे 11 क्वेश्चंस हुए होंगे एंड टोटल वी हैव टू डू 22 क्वेश्चंस. क्लियर? बट आगे थोड़ा फास्ट होगा ट्रांसफर प्राइसिंग से, क्योंकि टीपी के सब क्वेश्चंस सॉल्व किए हुए हैं. वी हैव टू जस्ट डिस्कस देम. क्लियर? इवन एडवांस टैक्स का सॉल्व किया हुआ है. तो इन शॉर्ट अभी एक डीमर्जर का सॉल्व करना है एंड उसके बाद यूनिलैटरल के दोनों सॉल्व करने, क्योंकि क्वेश्चंस पूछते ही है ना यूनिलैटरल रिलीफ के. सो आई थॉट स्लोली स्टेडीली नंबर्स आपके सामने सॉल्व करवा दो. रेडी ऑल ऑफ यू फॉर डीमर्जर्स क्वेश्चन? या तो ये डीमर्जर का क्वेश्चन है, उसमें कुछ सब क्वेश्चंस पूछे हैं. लेट्स ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम. फर्स्ट, ट्रांसफर of undertaking under a scheme of demerger by an Indian company to resulting Indian company is not regarded as transfer, as per section 47(6)(b). Therefore, the transaction of demerger is tax neutral, मतलब नो टैक्स, कुछ नहीं होगा. is tax neutral both for Parikshit Limited and Kota Limited. Clear? All of you comfortable? Second sub question पे चलते दोस्तों. When the shareholder transfers shares, when shareholder transfers shares on demerger held in an Indian company
to the resulting company, in bracket Indian, comma, it is not a transfer. It is not a transfer as per section 47 6C. Therefore, the transfer of shares by Burman therefore transfer of shares by Burman of Parikshit Limited in exchange for shares of Kota Limited will not lead to any capital gain in his hands. Will not lead to any capital gains in his hands. Is it clear, guys? Then lastly, that is third point, subsequent sale of shares of Kota Limited by Burman LTCG. So A point FVC वो उसने बेचे है 30 लाख को, लेस यही FVC स्लैश NSC है, लेस COA. COA is 8,40,000. So you will get 21,60,000. So 21,60,000 is LTCG. Is it clear? इसमें नोट लिखो, cost of shares of demerged company, cost of shares of demerged company is to be taken as cost of shares of resulting company. ये similar amalgamation में भी था provision. And then period of holding of shares in the demerged company is included for computing period of holding of shares See, period of holding of shares in the demerged company is included for computing period of holding of shares in the resulting company. Okay, and then no indexation benefit. No indexation benefit for assets
transferred on or after, पता है आपको 23 जुलाई 2024. And lastly, we come to fourth point, sale of shares of resulting company, sale of shares of resulting company by shareholders of the demerged company will not have any tax implication, will not have any tax implication in the hands of both, in the hands of both demerged company as well as resulting company. Is it, friends, absolutely clear to all of you? This way we complete the topic of business restructuring. Okay, so friends, इसी वे से हमारे कितने मार्क्स कवर हो गए? About 7 marks business restructuring, about 7 marks minimum tax planning, and about 20 marks taxation of companies. So लगभग 34 मार्क्स का यहाँ पे इस रिवीजन बैच में हमने कवर किया है अभी तक. So if you're okay, let me know. We will go ahead. Are you all comfortable? Shall we go ahead? Yes. अब चलते हैं कहां पे? Can we do unilateral relief? Unilateral relief के दो क्वेश्चंस. यूनिलैटरल बायलैटरल रिलीफ में यूनिलैटरल रिलीफ जो है सेक्शन 91 का, उसके सवाल पूछते हैं. अब यूनिलैटरल रिलीफ मतलब DTA does not exist between India and that other country from which doubly taxed income is earned. Clear? तो वैसे वाले क्वेश्चंस है, मजा आएगा आपको. यूनिलैटरल रिलीफ आपको आता ही होगा, बट मैंने सोचा कि चलो ये दो क्वेश्चंस कर लेते हैं तो बहुत कुछ उसमें रिवाइज हो जाएगा. एक है माला का एंड दूसरा है आनंद का. माला का और आनंद का. अच्छा, मिस्ड योर सेशन आफ्टर द ब्रेक. क्यों ऐसे क्यों किया आपने? कोई बात नहीं, ये तो रिकॉर्डेड रहेगा ही ना यूट्यूब पे. वेरी हैप्पी कि इतने लोगों ने सेशन को लाइक किया है. यस, चलो यूनिलैटरल रिलीफ पे चलते हैं. एक बहुत ही अच्छा फ्लो बना हुआ है, डोंट यू थिंक सो? तो आपको सेल्फ स्टडी भी इसी फ्लो के साथ करना है. बीच में मोबाइल नहीं चेक करना है, कुछ नहीं करना है, एकदम फुल फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए. ओके, कुछ खुद के लिए सिस्टम्स बनाओ, लाइफ बेहतर बनेगा. चलो, माला resident whose age is 56. अच्छा, नो प्रॉब्लम. देखो, नहीं, मैं सबके लिए बोल रहा हूं कि कुछ सिस्टम्स बनाओ, बहुत फोकस से पढ़ो. आज से लेके भी 1 महीना बाकी एग्जाम के लिए. यू कैन मेक वंडर्स. ओके, बस
सेल्फ डिसिप्लिन एंड ऑनेस्ट रहना है खुद के साथ. माला, resident whose age is 56, derived income of 15 lakh from business in foreign country. So foreign PGBP is 15 lakhs. Agreed? She paid flat tax at 30% on the above said income. Yes, Namrata is saying clear. Very good. She has, so ये हो गया foreign tax. ये हो गया foreign tax. She has a rental income of 12 lakh from let out property at Mumbai. तो ये income from HP नहीं है, ये rental income है. इससे माइनस होंगे डिडक्शंस, स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड इंटरेस्ट ऑन borrowed capital if any, है ना. Interest on money borrowed for acquisition of HP at Mumbai is 90,000. Government of India does not have any agreement with foreign country. तो DTAA नहीं है, फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन. DTA नहीं है, इसलिए तो सेक्शन 91 पे आना है. कंप्यूट टैक्स पेबल बाय मिस माला फॉर AY 26-27. आर यू रेडी? शैल वी कैलकुलेट? एक बताना था आपको, आज जैसे DT का रिवीजन है, सेम वे IDT का रिवीजन भी होगा ऑन नेक्स्ट संडे, दैट इज ऑन 10th of May. Feel free to attend that also. Tell your friends also. And ये सेशन होने के बाद प्लीज पक्का कमेंट करना, हाउ डिड यू फाइंड दिस सेशन. चलो स्टार्ट करते हैं. अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको याद हो जाएगा कि यूनिलैटरल रिलीफ वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं. तो ये है यूनिलैटरल रिलीफ का क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12 है एंड नाम है माला. अभी इंडियन इनकम एंड फॉरेन इनकम, पहले इंडियन इनकम ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं. इंडियन इनकम में क्या है, यहाँ पे HP इनकम है. HP इनकम मैं तो रफ वर्किंग कर रहा हूं, नहीं तो मैंने बहुत अच्छे से किया होता हेडिंग वगैरह देके. जीएवी कितना है? जो जीएवी है ना, वही एनएवी बन जाएगा, बिकॉज देयर इज नो म्युनिसिपल टैक्सेस पेड गिवन. माइनस होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन at 30% of NAV, which is 3,60,000, and minus होगा interest on BC, interest on borrowed capital, which you all know is given there. कितना? 90,000. So please minus all these things and tell me what is your income from HP. अरे थैंक यू सो मच हर्षद जी. हर्षद हो कि हर्षदा हो, आई डोंट नो, बट थैंक यू सो मच फॉर दैट. हर्षदा जी इज सेइंग सर बेस्ट सेशन फॉर एग्जाम. आप बैठे हो, यही बड़ी बात है यहाँ अभी तक सब लोग. सो आर यू गेटिंग like 7,50,000? 7,50,000 is income from HP. Go ahead. There is a PGBP and this is foreign income. That PGBP is 15 lakh rupees. So please add both. You are going to get 22 lakh 50,000. So friends, 22 lakh, acha Harsh. So Harsh, 22 lakh 50,000 is GTI and यही है टोटल इनकम. अभी आपको 115 BSC में निकालना है कि बाहर, नॉट गिवन, सो वी विल गो फॉर 115 BSC. अब 115 BSC में कैसे निकालते हैं? देखो 0 to 4 lakh, 4 lakh
to 8 lakh, 8 lakh to 12 lakh, 12 lakh to 16 lakh, 16 lakh to 20 lakh, and friends, finally 20 lakh to 24 lakh. तो बेसिकली यहाँ पे है 2,50,000. So isn't it 62,500? So aren't we getting 262,500? Yes. Add health and education cess at 4%, 10,500. So aren't we getting 2,73,000? But friends, इससे क्या होगा? इससे माइनस होगा रिलीफ अंडर सेक्शन 91. Yes, Harsh. Yes, Namrata is saying DST में एग्जाम्पशन मिला है. वंडरफुल, वंडरफुल. कब मिला नम्रता? लास्ट टाइम? I hope, I'm sure you will get in DT also. Okay. So relief under 91, that is unilateral relief. अब यूनिलैटरल रिलीफ लेते हैं, वो कितना मिलता है? लोअर ऑफ 2. नाउ व्हाट 2? 1 doubly taxed income multiplied by Indian rate of tax. तो डबली टैक्स इनकम कितना है? जो फॉरेन भी है ना, वो 15 लाख रुपए. तो 15 लाख रुपए इंटू इंडियन रेट ऑफ टैक्स और डबली टैक्स्ड इनकम इंटू फॉरेन रेट ऑफ टैक्स. तो आपको पता है फॉरेन रेट ऑफ टैक्स कितना है? मैंने वहां पे आपको मार्क करके दिया था. फॉरेन रेट ऑफ टैक्स इज 30%. यस? नो? यस. So doubly taxed income is 15 lakh and you know foreign rate of tax is 30%. So this is, you know how much? 4,50,000. But अभी एक ही चीज निकालने बाकी है, that is Indian rate of tax. So leave 1 to 2 lines, write down Indian rate of tax. अब Indian rate of tax क्या होगा? ओवरऑल टैक्स कितना है? Overall tax is 2,73,000. So 2,73,000 is upon 22,50,000 into 100. So 12.1333%. So 12.1333%. So isn't it 1,82,000? Actually, yes. 1,81,999.5. So please take 1,82,000. Now lower is 182.
सो 182 का आपको रिलीफ मिलेगा, तो 182 आप माइनस करना एंड टेल मी फाइनली व्हाट इज टैक्स पेएबल इन इंडिया. So we must be getting 91,000 rupees. Is 91,000? Are you getting? क्या 3,62,000 होगा? So 91,000 is net tax paid or payable. Clear all of you? Very good. All of you clear? I hope Namrata your doubt is solved. You were saying something 362 hoga, but I think your doubt is solved now. चलो आगे बढ़ू. और एक करना है सम कि खुद ट्राई करोगे. आनंद का सम करना है कि खुद ट्राई करोगे. आनंद के सम में आपको मजा आएगा क्योंकि आनंद का सम दिसंबर 25 में 7 मार्क्स के लिए पूछा था एंड मोर इम्पोर्टेंटली उस सम में कुछ फिगर्स फॉरेन करेंसी में दिए हैं. लेट्स सी. आनंद, रेसिडेंट इंडिविजुअल, एज 55, is CEO of ACE Limited, Chennai. He furnishes following particulars of income earned by him in India and country's head for the PY 25-26. Salary from ACE Limited, इससे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा. तो इफ अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम पे करना है तो 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, 23,25,000 टैक्स होगा. देन लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड एचपी निग्लेक्ट करना होगा बिकॉज यू आर इन 115 BSc. इंटरेस्ट ऑन एफडी 1,50,000 टैक्स हो जाएगा IFOS में. नाउ इनकम फ्रॉम बिजनेस इन कंट्रीज हेड $15,000. Royalty income from country's head, okay, for a fictional book, not eligible for deduction under 80 QQB. And anyways आप कहां पे हो? डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में हो, ये डिडक्शन मिलता ही नहीं है. नेक्स्ट, LTCG ऑन सेल ऑफ शेयर्स इन फॉरेन कंपनी. तो ये तीनों जो गेन्स है ना वो डॉलर्स में दिए हैं, अब इनको रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा. India has not entered into any DTA with country's head. Rate of tax in country's head is 20% for all the incomes. Now exchange rates are given. समझ में आया? अभी क्या एक्सचेंज रेट लेने वाले हो, कौन सा लेने वाले हो? जो बिजनेस इनकम है, बिजनेस इनकम जो है उसके लिए 75 लेने वाले हो एज ऑन लास्ट डे ऑफ द PY. तो इसके लिए 75 लेने वाले हो. रॉयल्टी इनकम जो है वो रिसीव्ड ऑन 10th April 26 है. ओके, so royalty income anyways you will assume that it is accrued fully during the year, so again उसके लिए भी 75 लेने वाले हो as on the last day of the PY. and LTCG हुआ है 28 March 26 को. so you have to take as on last day of the month in which the asset is transferred. मतलब 74.5 28 Feb 26 का लेना है. Okay, that is how, please remember this point. That's it.
Shall we go ahead and do the calculations? Calculations करते हैं. नाम क्या है? आनंद. आनंद का यूनिलैटरल रिलीफ का क्वेश्चन. लेट्स स्टार्ट. अब सैलरी इनकम ऑफ कोर्स रफ वर्किंग कर रहा हूं, इसलिए ज्यादा फॉर्मेलिटीज एक्सपेक्ट मत करना. मेन बैच में एकदम चकाचक वर्किंग करते, isn't it? We do amazing working in main batch. Salary income, can I directly show 24 lakhs minus 75,000, 23 lakh 25,000, then PGBP foreign PGBP is US dollar 15,000 multiplied by 75, which is 11 lakh 25,000. अब आगे बढ़ो. और क्या है फॉरेन? रॉयल्टी है. रॉयल्टी है $10,000 into 75, so which is 7,50,000. पीजीबीपी हो गया, रॉयल्टी हो गया, क्या बचता है अभी? सीजी. तो सीजी इज USD 6,000 multiplied by 74.5, so 4,47,000. Can you guys take the total? ओके, बट एक और चीज है. IFOS है इंडिया में, इंटरेस्ट ऑन बैंक एफडी. IFOS इंडिया वाला है, which is 1,50,000. Now take the total. 447 plus 150 plus 750 plus 1125 plus 2325. Are we getting 47,97,000? ये थोड़ा याद रखना कौन से डेट का लेना है सीजी के केस में. तो दिस इज GTI/TI. बाद में मुझे ये भी पूछना है 75 क्यों लिया है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा नोट्स में. तो 47,97,000 is your total income. Now go ahead and calculate tax under section. बट एक बात बतानी थी, टैक्स अंडर सेक्शन 115 BAC. ये जो है just 1 second. ये LTCG है ऑन शेयर्स. yes or no? Okay, टैक्स ऑन LTCG ऑफ शेयर्स ऑफ फॉरेन है ना, वो एट नॉर्मल रेट ही कैलकुलेट किया है. सो ए पॉइंट आपको, कैन आई जंप 0 to 24 lakhs? I know it is 3 lakhs and above 24 lakhs
I know tax is at 30%. So 4797 minus 24 lakh into 30%. 4797 minus 24 lakhs into 30%. 7,19,100. So 10,19,100. Add health and education cess at 4%. So are we getting 40,764? So are we getting 10,59,864? Friends, but no need to pay this tax. This is total tax. इससे माइनस क्या होगा? इससे माइनस होगा रिलीफ अंडर सेक्शन 91. कितना रिलीफ माइनस होगा? डबल टैक्स इनकम कैलकुलेट करना, वो ये है. ये 3 इनकम्स की टोटल लेना. ये डबल टैक्स इनकम्स है. चेक. 11,25,000 plus 7,50,000 plus 4,47,000. 23,22,000. ये डबल टैक्स इनकम है. So relief will be 23,22,000 multiplied by Indian rate of tax or 23,22,000 multiplied by given foreign rate of tax. दिया हुआ है ना foreign rate of tax. Check now. Is it given in the question? 20%. Rate of tax in country Z is 20% in respect of all the incomes. Do you agree with me? So it will be 4,64,400, but Indian rate of tax कितना होगा? Indian rate of tax will be 10,59,864 divided by 4797 into 100. So are you getting 22.294%? Yes. फॉरेन इसलिए नहीं लगाया. ठीक है. Go ahead. Whichever is lower, so 20%. ये तो 22.094% था, तो वो नहीं आएगा. तो 464 400 माइनस करना. प्लीज माइनस 464 400 and tell me what is your net tax payable. So isn't our net tax payable 5,95,464?
राउंड ऑफ करके 5,95,460. ओके, सो दिस वे यू डू द क्वेश्चन. चलो आगे बढ़ते हैं. आई होप कि ये रिवाइज हो गया. क्या रिवाइज हो गया? यूनिलैटरल रिलीज. शैल वी गो अहेड नाउ टू ट्रांसफर प्राइसिंग? Yes, sir. So is transfer pricing the last topic now? Yes, I think transfer pricing is the last topic. जिसके बाद एडवांस टैक्स भी करने वाले. So if you allow, can we first complete advance tax in next 15 minutes so that we can after that take a break of half hour and then start with transfer pricing? Is it fine? So we will do advance tax now. Ready all of you for advance tax? ये देखो एडवांस टैक्स फटाफट. नहीं, पहले एडवांस टैक्स करते हैं. वो 3:30 बजे तक हो जाएगा. देन 4 बजे तक ब्रेक लेते हैं. देन 4 से 6 ट्रांसफर प्राइसिंग करते हैं. इज इट फाइन? मतलब ब्रेक को इस आशा से जाते हैं कि सिर्फ ट्रांसफर प्राइसिंग बचा है. समझा क्या? एंड ये देखो मजा देखो, आपको ही समझ में आएगा कि स्मार्टली पढ़ा तो कितना अच्छा होगा. स्मार्टली पढ़ा तो कितना अच्छा होगा. कंपनीज, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टैक्स प्लानिंग, बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग, डीटीएस, ट्रांसफर प्राइसिंग, सबका मिला के 81 मार्क्स का वेटेज. अनबिलीवेबल. अभी एडवांस टैक्स भी करोगे तो 85. बहुत स्मार्टली पढ़ा ना दोस्तों, तो मतलब कॉन्फिडेंस तो आ ही जाएगा. चलो एडवांस टैक्स में क्या होता है? एडवांस टैक्स के प्रोविजंस तभी एप्लीकेबल होते हैं जब यू नो एडवांस टैक्स लायबिलिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10,000. गेटिंग इट? इन केस ऑफ रेसिडेंट सीनियर सिटीजन वो अप्लाई नहीं होते इफ रेसिडेंट सीनियर सिटीजन डज नॉट हैव पीजीबीपी. Resident senior citizen does not have PGBP, don't trouble him and ask him to pay advance tax. Okay? So advance tax liability मतलब advance tax total tax minus TDS TCS. तो ये अगर एडवांस टैक्स 10,000 या उससे ज्यादा है तभी एडवांस टैक्स लायबिलिटी आती है. जब वो आती है तो 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है. ऑन और बिफोर 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च. कितना पे करना है? 15, 45, 75, 100. क्लियर? जो शॉर्टफॉल होगा ना इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, दैट विल अट्रैक्ट इंटरेस्ट अंडर 234C. ये इंटरेस्ट होता है 1% पर मंथ. दिस इंटरेस्ट विल अप्लाई in 15 June and 15 September installments only if payment is less than 12% and 36% respectively. Clear? Clear? And then हमने डिस्कस किया 234B का इंटरेस्ट. 234B का इंटरेस्ट तभी आता है जब शॉर्टफॉल जब आपने एटलीस्ट 90% ऑफ एडवांस टैक्स पे नहीं किया है, तभी आता है.
and 234A का interest is for delay in filing of ITR. It is also at 1% per month for delay beyond due date of 139(1). क्लियर? सो बहुत सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे क्लास में, और मैंने आपको एक प्रोविजो याद करने को बोला था. आई होप वो प्रोविजो भी आपको समझा है. उस प्रोविजो में ऐसा होता है कि हमारा जो ये होता है कैपिटल गेन या कैजुअल इनकम होता है, तो उसमें इंटरेस्ट तभी अप्लाई होता है या एडवांस टैक्स तब से पेएबल होता है जब से उस सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट से जब वो आपने अर्न किया है. तो ये सब समझाने के लिए 2-3 क्वेश्चंस के थ्रू आपको लेके चलता हूं. ओके, जो ऑब्वियसली हमने क्लास में भी सॉल्व किए हैं. ओके, यस, नम्रता जी, लेट्स सी क्या क्या होता है, देखते हैं अभी. सो नम्रता, आपने आईडीटी सेल्फ स्टडी किया था? ओके, चलो मैं क्या करने वाला हूं, अभी क्वेश्चन ओपन करने वाला हूं. ये देखो, हुआ क्या ओपन? सी, मेन बैच में हमने इसके 5 क्वेश्चंस कवर किए. अब उस 5 में से कौन सा करना है? 2-3 कर लेते हैं. और मुझे ना वो देखना है. हाँ, वेरी गुड, सेकंड कर लेते हैं. उसमें बहुत बढ़िया है. उसमें क्या क्या हुआ है देखो. फ्रॉम द डिटेल्स गिवन बिलो, कैलकुलेट इंटरेस्ट पेबल अंडर 234C. A Limited made the following payments of advance tax during the FY 25-26. Okay, June 2nd 25 3.6 lakhs, September 14th, ये सब ठीक है. Return of income is filed on 31st July 26. Business income 90 lakhs है, and LTCG is taxable at 12.5%. ओके, एंड वो LTCG कमाया है on 5th December and it is rupees 15 lakhs. तो अभी हम क्या करेंगे, पहले टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे. सो लेट्स कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी. ओके, बिजनेस इनकम जो है 90 lakhs का, एंड वी आर हु आर वी, कंपनी. So see how to go ahead about this. ये देखो, पीजीबीपी, उस पे हमने टैक्स कैलकुलेट किया है 30%, सो इट इज 90 lakhs. देन हमने टैक्स कैलकुलेट किया एलटीसीजी पे एट 12.5%. ओके, रियली नाइस, नाइस टू नो दैट. राहुल इज सेइंग ओके. तो आप आ जाना ना, आईडीटी के मैराथन के लिए भी आ जाना.
ओके, लेट्स सी। अच्छा, आपने फास्ट ट्रैक लिया था नम्रता जी। आवर फास्ट ट्रैक यू हैव टेकन, वेरी गुड टू नो दैट। ओके, सो 90 lakhs पे टैक्स आएगा, विथ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कैलकुलेट करना, एलटीसीजी कैलकुलेट करना, ऑन दैट एलटीसीजी कैलकुलेट टैक्स एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। टोटल टैक्स पेबल आया 30,03,000। ओके, याद रखना जो 28,08,000 है ना, उस पे ही एडवांस टैक्स के इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट होंगे फॉर जून, सितंबर एंड दिसंबर, क्योंकि जो एलटीसीजी कमाया है ना वो बाद में कमाया है। तो ये देखो 15% ऑफ 28,08,000 अपने पे करने थे ऑन और बिफोर 15 जून, ऑन और बिफोर 15 सितंबर अगेन 28,08,000 का 45%, ऑन और बिफोर 15 दिसंबर हाँ, आपने कब कमाया वो देख लेना, व्हेन डिड यू अर्न दैट एलटीसीजी, 5 दिसंबर को कमाया, माय बैड। तो 5 दिसंबर के बाद जो इंस्टॉलमेंट्स आएंगे, 5 दिसंबर के बाद जो इंस्टॉलमेंट आएंगे दोस्तों, उस पे आपको एडवांस टैक्स कंसिडर करना है। सो 30,03,000 इंटू 75% एंड 30,03,000 इंटू 100%। क्लियर? यस। तो अभी देखते हैं पे कितने कितने किए हैं। तो ऑन और बिफोर 15 जून हमें पे करना था 421,200। आई होप समझा ना सबको। ओ, ओके, थैंक यू सो मच राहुल जी। चलो, तो 421,200, अब 360 आपने ऑलरेडी पे किया है दोस्तों। पॉइंट ये है कि शॉर्टफॉल तो है, बट क्या आपने एटलीस्ट 12% पे किया है? टेक ऑन योर कैलसी, 360 जो आपने पे किया है डिवाइडेड बाय 28,08,000 जो पेएबल था, तो इट कम्स टू 12.82%। तो इंटरेस्ट नहीं आएगा, सो इंटरेस्ट नहीं आएगा, नो इंटरेस्ट applicable for installment of 15 June in this case, as advance tax paid is 12.82%. Clear? Which is 12% or more. Clear? Then next installment में आपने पे किया है 4,15,000, सो टोटल पे हुआ है 7,75,000, बट पेबल था 12,63,600. So 12,63,600 minus 70,75, shortfall is 488,600. दोस्तों अपने 775 पे किया है आउट ऑफ 28,08,000, which is 28% only. So you have not paid at least 36%. तो शॉर्टफॉल पे इंटरेस्ट आएगा, और इंटरेस्ट कितने मंथ्स के लिए आएगा? इंटरेस्ट आएगा फॉर, यस, हाउ मेनी मंथ्स? फॉर 3 months. ये देखो 488,600 इंटू 1% इंटू 3। नेक्स्ट, अभी जो आपने शॉर्टफॉल कैलकुलेट किया वो टोटल टैक्स पे किया, क्योंकि 5 दिसंबर को ही आपका एलटीसीजी भी आ गया। तो अभी एलटीसीजी प्लस पीजीबीपी के ऊपर जो टैक्स है वो उसका 75%। सो यू हैड टू पे 22,52,250, बट टिल दैट डेट यू हैव पेड 18,25,000। तो अभी शॉर्टफॉल कितना हुआ? 22,52,250 माइनस 18,25,000, 427,250 शॉर्टफॉल हुआ। अब इस शॉर्टफॉल पे कैलकुलेट करना 1% फॉर 3 months, you will get 12,818. ओके, यहां पे इंटरेस्ट आता है इफ यू हैव नॉट पेड एटलीस्ट 75%। एंड लास्टली 15th March 30,03,000 फुल पेएबल था, आपने पे किया 1825, शॉर्टफॉल इज
1178, क्योंकि मार्च वाला जो इंस्टॉलमेंट है ना वो आपने 15 मार्च के बाद पे किया. इफ यू चेक हियर, वो मार्च वाला इंस्टॉलमेंट आपने 20 मार्च को पे किया. So I'm not considering it. So I will have to take shortfall as 11,78,000. So उस पे इंटरेस्ट आएगा at 1%. That is only for the month of March. बस तो हर एक इंटरेस्ट की टोटल लेना. That will be total interest under 234C. Clear? And ये बहुत अच्छे से नोट भी लिया है STCG LTCG के लिए. इस नोट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिन्होंने मेन बैच नहीं किया है. Done? Shall we go ahead? समझ में आया 234C कैसे ऑपरेट होता है. तो बाकी हर एक 234C का क्वेश्चन इससे तो आसानी होगा. ओके, देन 234B. 234B में एक ही याद रखना है, वो इंटरेस्ट तभी आता है जब क्या होता है. 234B का इंटरेस्ट तभी आता है जब आपने एडवांस टैक्स पेड इज लेस देन 90%, तभी आएगा वो इंटरेस्ट. 234B का एक हाथ क्वेश्चन है तो आई विल बी हैप्पी टू शो यू दैट. हाँ, ये देखो 234B का है क्वेश्चन 5, तो देख लो. एंड ए जो है ना, ए इज फॉर डिले इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न, बाकी कुछ नहीं. तो आपने आईटीआर की ड्यू डेट सपोज 31 अक्टूबर थी, बट आपने 10 नवंबर को फाइल किया, तो 10 डेज का डिले मतलब 1 मंथ, बिकॉज ईच मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ पे 1% पर मंथ का इंटरेस्ट लगता है ऑन द अमाउंट विच वॉज रिमेनिंग पेएबल ऑन 31 मार्च. तो आई थिंक 234 ए का तो आएगा आपको. अब बी का देख लो. सूर्या लिमिटेड भोपाल हैज फाइनल टैक्स लायबिलिटी. उसकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी दी है 15,60,000 फॉर FY 25-26. उन्होंने पे कैसा किया है? 3 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 4 लाख ड्यू डेट्स पे किया. You have to compute the shortfall in each installment and calculate interest liability under 234B and C. We are assuming that company has filed its return on 31st October. देखते हैं. तो क्या हो गया, 15,60,000 जो है ना, 15,60,000 का आप कैलकुलेट करना 15%. 15,60,000 का 15% कितना है? इट इज 2,34,000. तो ये पेएबल था पहले इंस्टॉलमेंट, बट पहले इंस्टॉलमेंट में आपने पे किया 3 लाख, तो कोई शॉर्टफॉल है ही नहीं. समझ में आया? ये देखो 234 पेएबल था, आपने पे किया 3 लाख, कोई शॉर्टफॉल है नहीं, कोई इंटरेस्ट है ही नहीं. नेक्स्ट में पेएबल था 45%. So 45% of 15,60,000. So 15,60,000 into 45%, 7,02,000 पेएबल था. आपने पहले पे किए 3 लाख, नए पे किए 2 लाख, तो टोटल आपने पे किए 5 लाख. पहले चेक करना, आपने 5 लाख पे किए डिवाइडेड बाय 15,60,000%. You have paid only 32%. तो नॉट 36% और मोर, तो शॉर्टफॉल पे इंटरेस्ट आएगा. तो 2,02,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना एट 1% फॉर 3 months. नेक्स्ट 75% ऑफ 15,60,000, और अभी तक आपने पे किया पहले वाले 5 लाख और नए 4 लाख, दैट इज 9 लाख. शॉर्टफॉल 270 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना एट 1% फॉर 3 months. एंड लास्टली 100% पेएबल था आपका 15,60,000 का, आपने पे किया अभी तक 9 लाख, नया 4 लाख, टोटल 13 लाख. शॉर्टफॉल है 2,60,000, इंटरेस्ट आएगा फॉर 1 मंथ. तो मार्च 31 तक का इंटरेस्ट कंसिडर होता है 234C में. तो दोस्तों 16,760 ये टोटल इंटरेस्ट आया.
Did you get that total interest? 16,760. अभी इसके बाद 234B के लिए एक्चुअली हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं. तो अभी तक आपने पे किया 13 लाख अपॉन टोटल पेएबल ऑफ 1560. So 13 lakh divided by 15.6 lakh into 100. So आपने अभी तक पे किया सिर्फ 83 पॉइंट समथिंग परसेंट. अब दोस्तों क्योंकि आपने सिर्फ 83 पॉइंट समथिंग परसेंट पे किया है विच इज लेस देन 90%, तो इंटरेस्ट आने वाला है फॉर द व्हाट यू हैव नॉट पेड टिल ऑन 1st अप्रैल. सो एज ऑन 1st अप्रैल आपका पेएबल कितना बचा है? आपका पेएबल बचा है 2,60,000, क्योंकि 15,60,000 minus 13 lakhs. Clear? So 2,60,000 पे इंटरेस्ट आएगा at 1% per month for 7 months. तो 7 months कैसे? 1st अप्रैल 26 से लेके 31st अक्टूबर 26. क्लियर? सो ये आपका इंटरेस्ट आएगा 18,200. So friends, I hope that 234 is also clear. पूछते हैं आजकल 234 ABC के क्वेश्चंस एग्जाम में. That's why I'm so much pressing on it. तो दोस्तों आशा करता हूं अभी तक सब कुछ क्लियर है. Shall we go ahead to transfer pricing after the break? Yes, online and students with me. Mark your attendance quickly. And I can see so many likes. Thank you so much, guys, for showing so much respect for the session. So now it is break till it is about. तो क्या हम 4 बजे वापस स्टार्ट कर सकते हैं? Can we start back at 4? 20 about 23 minutes का ब्रेक बस हो गया. So we'll start back at 4 p.m. When we start back at 4 p.m, we will be doing transfer pricing. Okay? Then after TP, we will be ending today's session. So see you guys. At 4.
Friends, I hope I'm again audible and visible to all of you. My phone is discharged, so I can't see the chat window for some time. Okay, but I hope I'm properly audible and visible to all of you. Let us start. Let us start. Okay. Now, last segment of this particular session. In this last segment, what are we going to do? So, friends, we are going to go ahead and do transfer pricing. Okay. So, as discussed in transfer pricing, the weightage and all I have already told you. Let's do now step by step. Now see whether two entities are associated entities or not. Okay, let's discuss that first. Okay, I'm also opening simultaneously my notes of international tax. How many cases are there? H till H. 8 cases. So lot of questions we have done in the main batch on transfer pricing. Yeah. So I think this is a question. Let's see. State with brief reasons whether the relationship of associated enterprises or deemed associated enterprise is present in following cases. तो दोस्तों आपको पता है कि डीम टू बी एसोसिएटेड एंटिटीज कब हो जाते हैं? जब होल्डिंग एक का दूसरे में 26% या उससे ज्यादा है of shares carrying voting power. Then loan given by one entity to another is 51% or more of book value of others' assets. Then bank guarantee given by one entity to another is 10% or more of the overall borrowings of other. Getting it? या फिर raw material supplied by one to other is 90% or more of the total raw material consumed. So इस वे से दोनों दो entities associated हो जाते हैं based on any of this criteria. Getting it? Now see. State with brief reasons whether relationship of associated enterprise or deemed associated enterprise is present in following cases. A Limited has 28% voting power in B Limited and 31% voting power in C Limited. Both B Limited and C Limited are independent enterprises in different line of business. आपको बोलना है
about relation between B Limited and C Limited. So please tell me, is B Limited and C Limited associated? A and B is associated and A and C is associated. So what about B and C? So check. A Limited has 26% or more equity shares in B Limited and C Limited. So now by virtue of common shareholding in B Limited and C Limited, these two entities shall be deemed to be associated entities. Clear all of you? तो ऑफ कोर्स यहाँ पे सम लेते वक्त हमने थोड़ा एडवांस्ड सम लिया है. Sun Limited is engaged in manufacture of medicines for joint pains. It is only partly dependent on Moon Limited for using the know-how to manufacture the same. Sun Limited pays royalty to Moon Limited as per regular trade practice. Now see, when an entity for the purpose of manufacture or processing of goods is wholly dependent on other enterprise, okay, there would be deemed a relationship. In the given case, Sun Limited is only partly dependent on Moon Limited and they are not deemed A. Clear? Therefore, they are not deemed A. 100% dependency honi chahiye. Next, Ram Limited is engaged in manufacture of computer hardware and for this purpose, it is dependent on Lakshman Limited. Okay, during FY 25-26, 88% of raw materials for configuring the computer were purchased from Lakshman Limited. So, dosto, it is less than 90%. So, they again both will not be deemed to be A. So, not deemed to be A. Clear? Why? Because when an enterprise depends on 90% or more of raw material or consumables which are supplied by another enterprise, then they are deemed to be A's. In given case, Ram Limited purchased only 88% of raw materials from Lakshman Limited and therefore they are not deemed to be A. Is it clear, friends, all of you? Comfortable? Let me check your chat window. अभी मेरा फोन चार्ज हो गया है फिर से. Yeah. I hope all have joined and all of you are attentive. चलो आगे बढ़ता हूं. Book value of assets of plant limited is 52 crores when it borrowed 20 crores from tree limited. So friends, 20 divided by 52 into 100, it is not 51% or more. So they are not deemed to be associated. Okay, so see, they are not A's. When one enterprise advances loan to another which is 51% or more of book value of total assets of borrowing entities, they both are deemed to be A's, but not in this case. In the given case, it is less than 51%. Next, the total borrowings of Jupiter was 7 crores, but Venus Limited gave guarantee to the extent of 2 crores. तो 2 crores divided by 7 crores मतलब 10% से ज्यादा लोन की गारंटी दूसरे ने दी है. So they both are deemed to be associated entities. Clear? Next, Gautam Limited is having major stake in many companies which in turn have major stake in Photo Limited. Gautam Limited has authority to appoint 4 out of 7 directors in Photo Limited.
So friends, majority means more than half of directors of other entity are appointed by me. So me and that other entity will be deemed to be associated. So yes, it is 57% of directors. So they shall be deemed to be associated entities. चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों. Next, Mukherjee Limited is engaged in manufacturing of mobile handsets. Entire handsets so manufactured are sold to Banerjee Limited. The price and terms and conditions relating to thereto are decided by Mitra Limited, being the holding company of Banerjee Limited. Assume the three entities are geographically located in three different countries with Mukherjee Limited at Kolkata. So yes, they are deemed to be A's because when goods or articles manufactured by one enterprise are sold to another enterprise and the prices and terms and conditions are decided by other enterprise, there is a deemed to be a relation established. So therefore, these three will be deemed to be associated entities. Then Arjun has 90% shareholding in Bheem Limited. So very good. Arjun and Bheem are associated. His brother Nakul has 85% shareholding in Hastina Limited. Okay. Now you have to decide the relation between Bheem Limited and Hastina Limited. So they will be deemed to be A's. Why they will be deemed to be A's? One enterprise is controlled by an individual and the other enterprise is controlled by his relative. Then they both are deemed to be associated entities. Clear, friends? So this way we complete the basic of what? The relation of associated entity. So sometimes they can ask you question whether two entities are deemed to be associated entities. So that is one category of questions that you have to do. Next category of questions that we have to do is computation of ALP and its effect on total income of Indian entity. तो आपको आर्म्स लेंथ प्राइस कैलकुलेट करनी है by either comparable uncontrolled price method, resale price method, transaction net margin method, profit split method और cost plus method. इन पांच में से एक मेथड से आपको ALP कैलकुलेट करनी है एंड उसको कंपेयर करना है विद TP and decide whether ALP should be adopted. If ALP is to be adopted, then what will happen? If ALP is to be adopted, then you have to check what will be its effect on total income of Indian entity. Clear? चलो देखते EF लिमिटेड का क्वेश्चन. पहले देख लो. हाँ, तो हमें हमेशा करना क्या है पता है? रफ वर्किंग करना होता है पहले. So I'll read the question, then we'll do the rough working. Then we make a decision कि ALP adopt करनी है कि नहीं करनी. And accordingly, you tell its effect on total income of Indian entity. EF Limited incorporated in Japan. So EF Limited is a foreign company and JK Limited, an Indian company, are associated enterprises. So EF को मैं लेफ्ट में रखता हूं, फॉरेन में है. JK को मैं राइट में रखता हूं, इंडिया में है. They both are associated entities. JK Limited manufactures refrigerators and sells to EF Limited. So JK Limited has done sales to EF and also MN Limited in Malaysia. JK has also sold to MN in Malaysia. Okay. During FY 25-26, JK Limited sold 5,000 refrigerators to EF at 25,000 per refrigerator. So this is transfer price. And 2,000 refrigerators to MN at rupees 32,000.
तो दोस्तों 32,000 seems to be arm's length price under comparable uncontrolled price method. बट कुछ डिफरेंसेस भी होने वाले हैं, हो सकते हैं. ट्रांजैक्शन विद ईएफ एंड एमएन लिमिटेड आर कंपेरेबल बट सब्जेक्ट टू फॉलोइंग डिफरेंसेस. इन डिफरेंसेस के लिए एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी. ओके, सो इन शॉर्ट ब्लाइंडली हम 32,000 नहीं ले सकते एएलपी. 32,000 में कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे. सेल्स टू ईएफ आर एफओबी, ये प्राइस एफओबी है, बट एमएनआर सीआईएफ, तो 500 रुपए इसमें फ्रेट और इंश्योरेंस के है, तो इसको हमें सीआईएफ को हमें एफओबी बेसिस पे लाना पड़ेगा, तभी दोनों कंपेरेबल हो जाएंगे. तो विल माइनस 500. गो अहेड. सेल्स टू ईएफ आर विदाउट वारंटी, बट सेल्स टू एमएन आर अंडर फ्री वारंटी फॉर 1 ईयर. तो 600 रुपए हमें माइनस करने पड़ेंगे, तभी वारंटी विदाउट वारंटी हो जाएगा. बिकॉज ऑफ लार्ज ऑर्डर, जेके लिमिटेड ऑफर्ड क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ 125 पर रेफ्रिजरेटर टू ईएफ, बट वो क्वांटिटी डिस्काउंट हमने किसको नहीं दिया है? एमएन को नहीं दिया है, सिर्फ ईएफ को दिया है. तो ईएफ की प्राइस कम हो सकती है बाय 125, तो 125 भी करना पड़ेगा माइनस. सो इन शॉर्ट 30,775 is what? 30,775 is arm's length price as per cup method. बट दोस्तों हमने एई को बेचते वक्त बेचा है कितने को? एई को बेचते वक्त हमने 25,000 को बेचा है. अब 2 मिनट के लिए सोचो, अगर हमने 25,000 को रिप्लेस किया विथ 30,775, so our income, our sales will increase by 5,775 per unit, क्योंकि हमने ए को बेचते वक्त सिर्फ 25,000 को बेचा है, बट एक्चुअल सेलिंग प्राइस इज 30,775. तो 5,775 से सेल्स बढ़ जाता. ओके, सो टोटल इनकम ऑल्सो विल इंक्रीज बाय 5,775 into 5,000 units that you have sold. So that gives us 28 crore, sorry, 2 crore 88 lakh 75,000. So we will have to add 2 crore 88 lakh 75,000 to existing total income of Indian company. Did you all understand how to do this? So presentation देखो. As JK Limited, an Indian company, and EF Limited, Japanese company, are associated entity, and transaction between them is an international transaction, provisions of section 92 for determination of ALP shall apply. Since similar goods are sold to another enterprise, MN Limited, which is unrelated party, the appropriate method for determining the ALP is cup method. ALP under cup method shall be computed as follows. So see, it comes to 30,775. If sale price to AE of 25,000 is replaced by ALP of 30,775, then sales shall increase by 5,775 per unit. So therefore, total income will increase by 2 crore 88 lakh 75,000. Is it absolutely clear, my dear friends? तो मेन बैच में बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं. ओके, सो डू फॉलो देम. नाउ लेट्स गो टू वन क्वेश्चन जिसमें ना एनजे के साथ ट्रांजैक्शन है. नोटिफाइड ज्यूरिसडिक्शनल एरिया में जब कोई एंटिटी होती है और उनके साथ ट्रांजैक्शन होता है, तो इट इज डीम्ड दैट ट्रांजैक्शन इज विथ एई. मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि वो एक्चुअली एई है, बट नोटिफाइड ज्यूरिसडिक्शनल एरिया इज एज गुड एज एनिमी स्टेट. तो आप उनके किसी एंटिटी के साथ डील कर रहे हो, तो इट इज डीम्ड टू बी एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन विथ एसोसिएटेड एंटिटी, एंड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 92 applies.
ओके तो देखो, एंड उसमें यू नो यूजुअली अरिथमेटिक मीन का बेनिफिट होता है। यूजुअली क्या बेनिफिट होता है कि अगर दो से दो या दो से ज्यादा एएलपीज निकल के आए सामने, तो वी कैन टेक अरिथमेटिक मीन, दैट इज द एवरेज, सिंपल एवरेज। एंड अभी जो ऐसी एएलपी हमने निकाली है सिंपल एवरेज लेके, ओके देन देयर इज अ 3% परमिसेबल वेरिएशन, बट ये 3% परमिसेबल वेरिएशन भी अलाउड नहीं है इफ द ट्रांजैक्शन इज विथ एनजेए। ओके तो देखो, ईएफ ईटीआई लिमिटेड, द एसएससी हैज सोल्ड गुड्स, सो ईटीआई लिमिटेड इंडियन कंपनी है, has sold goods to LP Limited located in NJ for 9.5 crores। तो क्या हुआ है, LP ETI has sold to LP for 9.5 crores। So 9.5 crores is TP। During the current FY, ETI Limited charged 10.5 crores from TP Inc. of country X। तो ये देखो, एक पार्टी है जो अनरिलेटेड है टीपी नाम की, ओके, जिनसे चार्ज किया है 10.5 CR। सो दिस इज एज गुड एज एएलपी नंबर 1 एंड एएलपी नंबर 2 इज 11 करोड़, ओके, विच इज चार्ज फ्रॉम अनदर पार्टी अनरिलेटेड। तो अगर आप दोनों का ये लेने वाले हो, पहले देख लो, while sales to TP Inc. and MN Inc. were on CIF basis, ये सब CIF basis पे है। The sale to LP was FOB, ये FOB है। The cost of freight insurance would amount to 18 lakhs. Okay. India's DTA with country X and country Y, the SSC has policy of providing after sale support service to the tune of 13 lakhs to all customers except LP Limited, which procured the same locally at the cost of 17 lakhs. So you have to compute ALP for sales made to LP Limited and the amount of consequent increase, if any, in the profit of SSC company। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ईटीआई लिमिटेड वाला, देख लो कहां पे है। वी विल जस्ट सी हाउ इट इज टू बी सॉल्व्ड। ये देखो, हमें क्या करना है अभी, टीपी इंक एंड एमएन इंक, इनके साथ जो ट्रांजैक्शन हुआ है, जो अनरिलेटेड पार्टीज है उनके साथ, वो सीआईएफ बेसिस पे है, उसको लाना है एफओबी बेसिस पे। तो यू प्लीज माइनस इंश्योरेंस एंड फ्रेट, इट इज 18 lakhs, so 0.18, एंड आफ्टर सेल सर्विस वो भी माइनस करना पड़ेगा बिकॉज इट इज नॉट प्रोवाइडेड इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन विथ ए। तो अननेसेसरीली ये सेलिंग प्राइस इन्फ्लेटेड है, तो माइनस करना आप। सो यू विल गेट 10.19 एंड 10.69 करोड़। तो उसका अरिथमेटिक मीन निकालना, इट कम्स टू 10.44 करोड़। बट हमने हमारे ए को बेचा है, ए मतलब जो पर्सन इन एनजेए, उनको बेचा है एट 9.5 करोड़। सो 10.44 माइनस 9.5, 94 लाख रुपीज या 90.94 करोड़ रुपीज ऐड होने चाहिए टू द एग्जिस्टिंग इनकम ऑफ आवर इंडियन एंटिटी। आर यू ऑल गेटिंग इट? क्या हुआ, क्या हुआ, समझ में आया क्या? एंड usually 3% permissible variation is there where ALP is determined by arithmetic means of various ALPs, but such variation is not allowed
when transaction is with entity in NJA. Clear all of you? So बहुत ही बढ़िया ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में जहां पे एनजे के साथ ट्रांजैक्शन है. So see, as per section 92, provisions of arm's length price shall be applicable where transaction is international transaction between A. In given case, ETI has sold goods to LP located in NJA and therefore it is deemed to be a transaction with A. Therefore, provisions of section 92 shall apply. Clear? Yes. Clear? ETI लिमिटेड ने गुड्स बेचे हैं एलपी को जो एनजे में है, तो इट इज डीम्ड टू बी एसोसिएटेड एंटिटी. अभी हमने बेचने की क्या निकालनी थी? आर्म्स लेंथ प्राइस. बट हमने जो दूसरे दो लोगों को बेचे थे वो कैसे बेचे थे? एट सीआईएफ बेचे थे. बट हमने हमारे एंटिटी को कैसे बेचा था? एट एफओबी. तो सीआईएफ से आप एफओबी पे कैसे आ गए? इन कंपेरेबल ट्रांजैक्शन में सबट्रैक्ट करके ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस कॉस्ट. एंड एक और चीज, आपने आपके एंटिटी को बेचते वक्त विदाउट वारंटी बेचा था बट दूसरों को बेचते वक्त विथ वारंटी बेचा था, तो वो भी अमाउंट माइनस करनी पड़ी. तो हमें मिलेगा एएलपी विच इज नथिंग बट सेलिंग प्राइस विदाउट इंश्योरेंस एंड ट्रांसपोर्ट एंड विदाउट वारंटी. तो वही बन जाएगा आर्म्स लेंथ प्राइस. बट दो आर्म्स लेंथ प्राइस है तो हमने क्या निकाला? अरिथमेटिक मीन, दैट इज सिंपल एवरेज. तो आशा करता हूं समझ में आया आपको. तो हमारा सिंपल एवरेज 10.44 करोड़ आया. अगर आपने हमारी जो सेलिंग प्राइस है एक्चुअल एनजे में जो एंटिटी है उसको, दैट इज हाउ मच? दैट इज हाउ मच? 9.5 करोड़. अगर हमने 9.5 करोड़ को रिप्लेस किया विथ 10.44 तो हमारा टोटल इनकम बढ़ने वाला है विथ 0.94 करोड़. क्लियर ऑल ऑफ यू? तो वो ऐड करने चाहिए टू द एग्जिस्टिंग इनकम ऑफ इंडियन कंपनी. फंटास्टिक. चलो, थिन कैपिटलाइजेशन के का मैंने एक क्वेश्चन कवर किया है आपके लिए. मेन बैच में 5 किए हैं, यहां पे एक कवर किया है. तो थिन कैपिटलाइजेशन क्या होता है? इट मीन्स whenever Indian entity is paying to associated entity in foreign, then the interest cannot exceed 30% of EBITDA. ओके, आपको समझाता हूं अभी इस क्वेश्चन के माध्यम से. एंड देखो कितने बार ये सवाल पूछते हैं. ये इस टाइप का सवाल पूछते हैं एग्जाम में. सो प्लीज डू thin capitalization properly. Kiwi LLC is a foreign company incorporated in Singapore. Okay, Bright Star Inc. is a foreign company incorporated in Australia, and Daffodils Private Limited is an Indian company. Indian company has taken a loan of 120 crores from Moonshine Inc., a foreign company, at 10% per annum on 1st October 25. So अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च 6 मंथ्स का ये अभी है इस साल. तो 120 करोड़ इंटू 10% इंटू 6/12 कितना आया? 120 इंटू 10% इंटू 6/12, तो 6 करोड़ रुपीस का इंटरेस्ट है. गारंटी फॉर दिस लोन हैज बीन प्रोवाइडेड बाय BI. ओके, this is the only loan taken by DPL during the year. Kiwi LLC holds 27% of voting power in BI as well as DPL. तो इस वजह से ना ये लोन as good as taken from associated entity हो जाता है. NP of DPL after above interest
डेप्रिसिएशन इज 1.8 करोड़, बट मुझे चाहिए अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, but 1.8 crores is after. Okay, but good, it is before income tax. But before income tax is 9.2 crores. Okay, and income tax liability for the year may be taken as 1.2 crores. So net profit, see, we want earnings before interest, tax, depreciation and amortization. But so before tax is 9.2 crores. So उसमें आप क्या करोगे, ऐड करोगे जो नहीं चाहिए. अब देखो 9.2 करोड़ आया, उसमें इंटरेस्ट ऐड किया 6 करोड़ एंड डेप्रिसिएशन ऐड किया 1.8 करोड़. इंटरेस्ट तो मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया था, एंड डेप्रिसिएशन है 1.8 करोड़, तो 1.8 करोड़ वो ऐड किया, तो मुझे मिला एबिटडा. एबिटडा आया 17 करोड़. तो 17 करोड़ का 30% कैलकुलेट करना, इट कम्स टू 5.1 करोड़. तो दोस्तों यहाँ पे 5.1 करोड़ तक ही इंटरेस्ट चलेगा, बट हमने कितना पे किया है, हमने पे किया है 6 करोड़ रुपए. तो कितना एक्सेस है, 0.9 करोड़ एक्सेस है, तो वो डिसअलाउ हो जाएगा अंडर सेक्शन 94B. क्लियर ऑल ऑफ यू? दिस इज हाउ इट वर्क्स. अब यहाँ पे ये प्रोविजंस अप्लाई क्यों हुए? नाउ किवी एलएलसी holds 27% of the voting power in BI as well as DPL, which is 26% or more. इसलिए BI and DPL will be deemed to be associated. Where the debt is issued by lender which is not AE, but an AE either provides implicit or explicit guarantee to such lender, then such debt shall be deemed to be have been issued by AE, and limited interest deduction would be applicable. If an Indian company being borrower incurs any expense by way of interest in respect of any debt issued by its NRA and such interest exceeds 1 crore, तभी ये 94B का restriction apply होता है. Interest towards A in foreign should exceed rupees 1 crore. Then the interest paid or payable by such Indian company in excess of 30% of EBITDA or interest paid or payable to A, whichever is lower, shall be allowed as deduction. Hence, this working we have done. Clear all of you? So this way आप please thin capitalization का जो भी question हो पाए वो cover करना. Clear? Then friends, we will go to questions of secondary adjustments. Are you ready for secondary adjustments questions? All of you? Let's start. सेकेंडरी एडजस्टमेंट क्या होता है, जिसको नहीं पता है सुन लो अच्छे से. क्या हुआ है, से फॉरेन कंपनी थी X, इंडियन कंपनी थी Y. इंडियन कंपनी ने फॉरेन कंपनी को, यानी दोनों एसोसिएटेड थे, इंडियन कंपनी ने फॉरेन कंपनी को गुड्स बेचे 100 को, सेल किया 100, बट यही सामान, ऐसा ही सामान उसने नॉन एसोसिएटेड एंटिटीज मतलब अनरिलेटेड पार्टीज को बेचा फॉर 80, सॉरी नॉट 80, माय बैड, फॉर 150. तो इन शॉर्ट सेम सामान मतलब ALP इज 150. तो इन शॉर्ट 50 रुपए इज यू नो क्या, अगर 100 इज TP ना, if that is replaced by 150, sales will increase. सेल्स कितने से बढ़ेंगे,
सेल्स बढ़ेंगे 50 से. Yes. If sales will increase by 50, friends, then what will happen? If sales will increase by 50, then don't you think कि that 50 rupees should be added back to existing total income of Indian company? Yes. उसको बोलते हैं primary adjustment. But sales should increase by 50 मतलब X हमारा 50 लेके बैठा है, जो भी है 50 लाख 50 करोड़ वो वापस देना चाहिए, तो वापस लेना चाहिए हमने as Y. Yes. So if we receive it back, if we receive that 50 which is to be recovered, हमने 100 को ही बेचे ना, बट प्राइस 150 थी ना, तो 50 तो मिलने चाहिए, और तो 50 और मिल गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट 50 नहीं मिले तो दोस्तों एक्चुअली 50 लेना मिलना इज सेकेंडरी एडजस्टमेंट. अगर 50 टाइम में नहीं मिले तो हमें उस पर इंटरेस्ट ऐड करना है इन द एग्जिस्टिंग इनकम ऑफ इंडियन कंपनी. और अगर 50 कभी लेने ही नहीं है वापस, तो वी हैव टू पे टैक्स ऑन दैट 50 एट 20.9664%. ये टैक्स पे कर देना है एंड कंप्लीट करना है असेसमेंट. क्लियर? दिस इज सेकेंडरी एडजस्टमेंट. अब देखो उसके बेस से क्वेश्चन. विष्णु पॉलीमर्स is an Indian company having transactions which are subject to transfer pricing adjustments. In June 25, the assessments for AY 24-25 and 25-26 were computed after due process under law. In both the years, in respect of transaction with its AE, ALP has determined in euro. For the AY 24-25, the primary adjustment translated into 90 lakhs for transaction with N Inc. Singapore, and for 25-26, same being for 2.4 crore for transaction with PK Inc. Australia. The AO was passed on 12th June 25. The assessor is inclined to accept the same and has not preferred any appeal. How will quantum of primary adjustment be treated in the books of assessee vis-a-vis secondary adjustment? ओके, सो ये भी प्रोविजन तभी अप्लाई होती है जब प्राइमरी एडजस्टमेंट एक्सीड्स रुपीज 1 करोड़. तो ये इसके लिए अप्लाई नहीं होगी 90 लाख के लिए, ये सिर्फ 2.4 करोड़ के लिए अप्लाई होगी. क्लियर? सो यू शुड रिसीव 2.4 करोड़ फ्रॉम दैट ए. इफ यू रिसीव इट इज ओवर. इफ यू डोंट रिसीव, then for the delay in receiving, pay the interest. And if you never want to receive, then pay tax. So what are the steps to be taken to prevent secondary adjustment? Will there be any secondary adjustment in hands of assessee? If the required steps are not taken, you are required to outline the concept involved. तो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है. ये देखो, ये सब हमने किसका किया था? ये हमने किया था इसका, क्या बोलते हैं उसको, थिन कैपिटलाइजेशन. ये देखो, ये वो वाला क्वेश्चन where primary adjustment has been made by AO, the same impacts assessee when same relates to AY after 1617, क्योंकि 1617 के बाद सेकेंडरी एडजस्टमेंट के कॉन्सेप्ट्स आ गए. Then the quantum of primary adjustment in each year is exceeding 1 CR. ठीक है, तभी क्या करना है, तभी जाना है एंड सेकेंडरी एडजस्टमेंट करना है. The same is accepted by assessee. Of course, it should be accepted by assessee. In such a situation, the same will be treated as loan or advance given by assessee to the A, associate entity. In given case, since the quantum of primary adjustment made in 24-25 is below 1 CR, the same is to be ignored for secondary adjustment purposes. Only primary adjustment, that is adding back 90 lakh, will have to be made. Okay. Only the primary adjustment made in AY 25-26, that is of 2.4 crore,
will be considered for secondary adjustment. Understood na? क्योंकि it exceeds rupees 1 CR. If secondary adjustment is to be avoided, then A should repatriate the funds into India in foreign exchange within 90 days from the date of order. If the same is not done, interest will be deemed to accrue on such advance at prescribed rates. What are the prescribed rate of interest? It is 6 months LIBOR, okay, as on 30 Jan plus 3% as it is international transaction in euro. Okay, रुपीज में ट्रांजैक्शन तो MCL है. चलो आगे बढ़ते. नेक्स्ट, अब आपको बताना है कि रिपैट्रिएशन जो है ऑफ एक्सेस मनी वो कितने समय में होना चाहिए. सेकेंडरी एडजस्टमेंट के केस में जो रिपैट्रिएशन है वो कितने डेज में होना चाहिए एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम विच डेट इन दिस 3 केसेस. So AB Limited determined ALP of transactions and made primary adjustment of 210 lakhs and filed return of income on 25th September 2026. So दोस्तों अब कब से काउंट होगा? It will be counted from due date of filing of return. Due date of filing of return is 30 November for those assessees who have international transaction. So last date will be 90 days from this 30th of November. So it will become count 28th of February 2027. या आपको मिल जाएगा बी यूनिवर्सल जी, आपको मिल जाएगा. नेक्स्ट, where the primary adjustment, next अभी ध्यान दो आप. MNO Limited filed its return of income for AY 26-27 on 10 June 26 and subsequently entered into APA advance pricing agreement में enter किया on 30 September 26. The increase of ALP determination as per APA was 80 lakhs. आएगा ही नहीं क्योंकि secondary adjustment आएगा ही नहीं, because the amount of secondary adjustment is the amount of adjustment is not exceeding 1 CR. Secondary adjustment of excess money will not apply in this case. समझा? But time limit क्या था? Within 90 days from the due date of filing of return under 139(1) of the Act, where the primary adjustment to TP is determined by APA entered into, and APA was entered into before due date of filing of return, then the last date was 90 days from due date of filing of return. But anyways यहाँ पे secondary adjustment required ही नहीं है. And lastly, PQR Limited filed a return of income for AY 25-26 on 5/11/25, means within due date, and after that entered into APA on 10/12/25. अभी आपको क्या करना है? An increase is of 190 lakhs. अभी आपको क्या करना है? 31st December को ये मंथ कंप्लीट हो जाएगा. एक्चुअली 31st November मतलब ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ITR के बाद you have entered into APA. So now you have to calculate 90 days from the end of the month in which APA was entered into. समझा? Time limit of repatriation of excess money, that is 90 days, must be counted from end of the end of the month in which the APA was entered into. तो इस केस में
31 दिसंबर के बाद 90 डेज कैलकुलेट करना। तो जैन के 31 डेज, फेब के 28 डेज, मार्च के 31 days. So by 31st March, you should receive that money back. The fund should be repatriated. Clear? This way, guys, we have to do what? The secondary adjustment. And then, friends, coming to last thing in today's session, that is advance pricing agreement. Okay, मैं आपके ही सामने ये जो PDF भेज देता हूँ. Just give me 2 minutes. Afterwards, I might forget it. So don't want that risk. कहाँ पे गया? Yeah, got it. 15 पेजेस का PDF है क्योंकि सिर्फ क्वेश्चंस इन्वॉल्व है. मैं टीम को भेज देता हूँ. They will either upload in कहाँ पे? It will be either uploaded in the drive. ओके, अभी बहुत प्रेशर आ गया मोबाइल पे भी क्योंकि कब से चैट विंडो चालू है ना, तो वो सब अभी गर्म हो गया, हिट हो गया सब. मोबाइल, लैपटॉप, टैब, क्योंकि पिछले 6 घंटे से हम बैठे हुए हैं ना. क्लियर? अब दोस्तों एपीए देखेंगे and then we can conclude today's session. All of you agree? Thank you so much for so many likes, and I am sure that you have watched the session from beginning till end, and बहुत सारे लोग इसका recorded version में भी फायदा लेंगे. And of course ये PDFs में आपको मिल जाएंगे. But PDF सिर्फ questions के मिलेंगे, solutions के screenshot लेने पड़ेंगे क्योंकि वो क्या है, assimilated है. At the most मैं ये solution वाला फाइल भेज सकता हूँ. कौन सा? जो हमने आज क्रिएट किया वो फाइल भेज सकता हूँ. चलो अब आरती लिमिटेड का क्वेश्चन देखो. एपीए मतलब क्या? एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, इजंट इट? तो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट जो बनाता है एसएससी विद सीबीडीटी विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट, उसमें प्राइस डिटरमाइन होता है इन एडवांस, ओके, ऑफ ट्रांजैक्शन टू बी, ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन टू बी अंडरटेकन और विच हैव ऑलरेडी बीन अंडरटेकन. सो रोलबैक मैकेनिज्म भी है. AP also has rollback mechanism. Okay, so see, Aarti Limited SSE having international transaction entered into APA for the transaction entered into with its A's in Sweden on 12th Jan 26. The SSE has been doing identical transaction for past 5 years and intends to continue the same in the future also. The applicable method for determining ALP is cost plus method. ALP for 26-27 is 540 euros per metric ton. Okay. Now, AY 25-26 ALP as per metric ton if APA is applied comes to 520. And ALP as per assessment completed is 530. ओके, तो इसमें तो ऑलरेडी ज्यादा ही है, तो कुछ नहीं करना है. ALP if APA is applied is 550.
₹20 का डिफरेंस है पर यूरो। यहाँ पे तो 560 एंड 580, यहाँ पे 500 एंड 490, ₹10 का डिफरेंस है, ₹5 का डिफरेंस है यूरो पर मेट्रिक टन। मतलब एएलपी पर मेट्रिक टन if advance pricing agreement is applied। अब देखो दोस्तों क्या हुआ है। APA will apply for the PY in which it is entered into and 4 years forward. So maximum time limit for which APA is applicable is 5 years. That year and 4 next years. Thus it will apply for AY 26-27 and 4 AYs in future. In short, maximum for 5 years APA can be entered into. Prima facie, rollback will apply for 4 years only. Okay, that is 4 backward years. तो अभी आपने जो ALP डिसाइड किया है बाय वे ऑफ APA वो अप्लाई हो सकता है बट पिछले 4 साल के लिए, नॉट मोर देन दैट। सो AY 25-26, 24-25, 23-24 and 22-23. It cannot apply for 21-22. Further, rollback is not applicable where ITR has been filed beyond due date as per 139(1). Okay, that is in case beyond 3011. So for AY 25-26, ITR has been filed beyond due date and hence rollback provision will not apply. देख लो आप, ये देखो डेट ऑफ फाइलिंग ITR 25-26 के लिए 21 मार्च 26। तो यहाँ पे आप रोल बैक प्रोविजंस अप्लाई कर ही नहीं सकते, यहाँ पे टाइम लिमिट हो गया इसलिए नहीं कर सकते। सो ये सिर्फ 3 सालों के लिए डिसीजन लेना है। वी हैव टू टेक डिसीजन ओनली फॉर दिस 3 years. Also, rollback provisions not applicable when ALP has effect of reduction of total income already declared. For AY 23-24, if APA determined ALP is 560 per metric ton against already declared of 580, it will result in decreased sales per metric ton and therefore decreased income. Hence, rollback provisions cannot apply. So now, rollback apply कौन से years के लिए होंगे? 24-25 and 22-23. 24-25 में अप्लाई किए अगर रोलबैक तो ₹20 से इनकम बढ़ेगा, तो हमें वो बढ़ाना चाहिए। एंड 22-23 में अप्लाई किए तो ₹10 से बढ़ेगा, तो वो बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ALP per metric ton if APA is applied is 550 and ALP per metric ton as assessment completed is 530. तो ये प्रॉब्लम है। For AY 26-27, SSC has not yet filed ITR. Hence, in ITR to be filed, A Limited can apply the APA and complete ALP in accordance with the same. Okay? समझा? एंड ये जो आप मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करने वाले हो पिछले 2 सालों के लिए जो अभी डिस्कस किए, तो वो कब तक फाइल करना चाहिए? सो फॉर AY 22-23 and 24-25, A Limited has to furnish modified return within 3 months. From which date? From end of the month in which APA was entered into. Okay, तो APA एंटर हुआ 12 जैन को, so 31 जैन पकड़ो, फेब मार्च अप्रैल 30 अप्रैल तक फाइल होना चाहिए मॉडिफाइड रिटर्न। क्लियर? So this way please do APA questions. Then आपको पूछा है पीरियड ऑफ वैलिडिटी, किसकी वैलिडिटी? मित्तल एंड कंपनी एंगेज्ड इन
Delhi is manufacturing computer hardware. It has been exporting its goods to unrelated parties till 31/3. It is contemplating, means planning, to sell only to AE exceeding 100 crores in every FY, commencing FY 26-27. As the manager of the company, you are requested to briefly explain with reference to advance pricing agreement the period of its validity. तो you all know जो एपी एंटर होगा वो वैलिड रहेगा for upcoming 5 years. The year for which it is entered plus next 4 years. Fees payable 10 लाख रुपए fees payable है. It is binding on whom? So it is binding on the SSC, okay, and the assessing officers, and determination of ALP after entering into AP. So in short, all details of APA you will find in this particular answer. इसलिए मैंने ये पॉइंट मार्क किया है, ये क्वेश्चन मार्क किया है, कवर किया है, isn't it? So period of validity of APA, just now we discussed 5 consecutive years, commencing with the PY it is entered into. Yes sir. Next, when the amount of international transaction exceeds 100 crores, fees will be 10 lakhs. Binding nature, binding on person in whose case and in respect of transaction in relation to which APA was entered into, मतलब SSE and the income tax officers who are principal commissioner of income tax or commissioner of income tax and IT authorities below its rank. And APA would stop to be binding. कब वो stop होगा binding? If there is change in law or change in facts which have bearing on such APA. Okay, and APAs which are vis-a-vis ALP determination. Once APA is entered into, ALP shall be determined in accordance with APA only. Okay, you cannot then do anything else. Clear, friends? So this way, I think we have given justice to the revision. Have you all understood all the things? Last 6 hours, we were on to revision of CMA final direct taxes. Friends, so I will send you this PDF of questions. We have covered 21 questions plus about 2 questions of advanced tax. So about 23 questions we have covered. Okay, so this way I think A and B category at least we have covered. Clear? So I hope all of you are happy with the revision batch, with the marathon. So I would strongly suggest that you please put your comments. How did you find it? Okay. And और क्या बताना था आपको? Yes, this PDF also we will give you. Which PDF we will give you? ये जो अभी हमने सम सॉल्व किए क्लास में बैठ के लिटरली जो सॉल्व किए सम्स, उसकी पीडीएफ मैं आपको दे सकता हूं क्योंकि ऑल दोस थिंग्स आर एट वन प्लेस. So who all are there with me till now? Please mark your attendance. Say hi, hello to me. मैं कौन सी पीडीएफ बोल रहा हूँ? ये वाली, ये स्पेसिफिकली मैराथन वाली पीडीएफ जो है, that also I will upload. About कितने पेजेस की वो हो गई है? वो हो गई है लगभग 27 पेजेस. That also I will upload for you. यस सर, अमेजिंग सेशन. इतना पढ़ने में 3 दिन लग जाते. ओके, तो 3 दिन का काम 4-5 घंटों में हो गया है. वेरी नाइस. सो फ्रेंड्स, thank you so much to be part of MEPL. I wish you all the very best for your upcoming exams. Stay blessed and do subscribe to the channel, hit the bell icon and 100% comment on this video afterwards. ये वीडियो अभी सेव हो जाएगा इसी चैनल पे. Then you can comment on it how you found it. And if it was helpful for you, then please do
share it with others for whom you care. Thank you. Bye-bye. Take care. Stay blessed. Your tax mentor, CA Pratik Neve from Team MEPL, signing off. And don't forget to come back on 10th of May for the IDT marathon if you're giving IDT.